Hello, hello. Okay, so yeah, let's start with the stream for today. Today I'll try to spend less time in brainstorming the question. I'll not spend like an hour for. I'll try to keep everything like timed because now that we have solved almost 70 problems, it's time to upgrade slowly, slowly. Okay, so the things that I have to keep in mind, uh, try to spend less time in like thinking about or spending more and start spending more time in figuring out the solution. Okay, अगर 20 मिनट के बाद भी solution नहीं मिल रहा है तो we'll start to take the helps. Cool. Cool, then I'll not wait for more people to join because I have seen people are clearly very interested in these streams, and yeah, I haven't had my dinner just because okay, so this question, let me copy this and paste it here. So this seems like almost same. For this question I bought the premium. Now I have a premium account. I hope many of the people over here haven't solved. Hello, hello. Hello, bro. Top 1% engineer. Shubham, if I'm not wrong. How are you, bro? I asked about the poll yesterday. Let me see if you guys have answered what kind of a question that, uh, what kind of a project that I should be building. So, कहाँ गया वो? This post. So at 20% said distributed login system, 40% said rate limiter. So we can. I was thinking about creating the rate limiter, bro. If you are here, आपने प्रीमियम लिया है? कूल, या ले लिया यार मैंने प्रीमियम. मैंने सोचा कि यार साला इतना तो बिल एक बार कभी बाहर जाते तो हो जाता है, तो क्यों ही रुके, ले ही लेते हैं. Now that, because I asked ChatGPT, is there any other question that I can solve? He gave me a list of ChatGPT gave me a list of questions which are all behind the paywall. So I thought, why not? Let's buy it. आपका जो yeah, no, I was thinking about what could be the best rate limiter. Could be an easier one, slightly easier one. Like in that one we'll have only yeah एक दो concept ही नए होंगे and we can start with that. Login system is like it's also easy, not that difficult, because I have implemented in actual product and I used other services, so that could be a issue. That could be a thing, but it would take much time. Uh, can we get your LinkedIn? Yeah, sure. I'll pin it in the I'll pin in the chat. मैंने हालांकि अभी रिसेंट वाला स्विच उसमें अपडेट नहीं किया है. I just switched a company, so this is my LinkedIn. I have pinned the message. What you are saying? चाइना का एलसी है उसमें.
एलसी प्रीमियम क्वेश्चंस फ्री मिलते हैं। अच्छा। अब तो मैंने खरीद लिया यार। आई हैव बॉट इट, सो नो वरीज। Let me start a poll, the same poll, which, because I need involvement in that. So, what are you saying? Uh, I don't understand where to start my DSA. I'm in my fourth year, starting this year. I'm as in DSA like can't just solve basic array problems. अरे ठीक है, everybody starts from there. It's named lint code. अच्छा, lint code भी चीज़ है, तुम्हें बताते अथर्व। ओह। Is it? Yeah. I don't understand where to start my DSA. I'm in my fourth year. See, मेरे को भी ऐसे ही प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम इफ यू सी माय डे वन का स्ट्रीम. So there also I was like confused क्या solve करे कैसे करे, but then I started from problem one. Don't think much, start with the easier ones. Uh, there are some easy problems as well. Video देखो, I followed the Strivers list initially, और Strivers list के F2F something उसका channel name भी है, that is also very good. So basic करके, and most importantly this, सबसे important है this pen and paper. इस पे तुम आके अपना पूरा माथे में जो भी है ना, जो भी ब्रूट फोर्स तुम्हारा कोड है पहले लिखो उसको। ठीक है, यू राइट एवरीथिंग, डजेंट मैटर इज इट राइट और रॉन्ग, चैट जीपीटी है अपने पास अपने को करेक्ट करने के लिए। सो वॉट एवर इट इज, राइट इट डाउन वन कोड, उसको लीड कोड में लेके आओ। ठीक है, लीड कोड में लिखो, वहाँ पे तुम्हें सिंटेक्स एरर्स मिलेंगे, सॉल्व दो सिंटेक्स एरर। ठीक है, वो सिंटेक्स एरर सॉल्व करने के बाद तुम्हें पता चलेगा अरे नहीं ये वर्क नहीं हो रहा। फिर देखो उससे कोई कौन कौन से टेस्ट केस फेल हो रही है। ठीक है, कुछ भी पास नहीं हो रहा, जीरो टेस्ट केसेस पास हो रहे, तो गेट ए हिंट, यहाँ पे हिंट होता है। सो देर आर सम हिंट्स, या चार्ट जीपीटी को बोलो डोंट गिव मी फाइनल आंसर, गिव मी जस्ट हिंट, how can I proceed in this, because I have hit the rock bottom in this problem. So ChatGPT will throw you in a right direction. So वो डायरेक्शन ये कर लो, धीरे धीरे करके आ जाएगा, डोंट वरी। आपका एनर्जी लेवल नीड्स टू बी स्टडीड, मुझे इसका 50% मिल जाता तो भाई सुबह सुबह जिम करो, एनर्जी आ जाता है, या बॉलिंग करो। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, या तो मैं क्रिकेट के लिए, क्रिकेट में बॉलिंग करने जाता हूँ तो मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, भले ही मैं सुबह 6 से 8 करने जाता हूँ, लेकिन दिन भर मेरा एनर्जी आया रहता है फिर। रियली लाइक दैट कमेंट, बट यू विल। स्ट्राइवर को फॉलो कर रहा था, बट फिर वो कुछ ज़्यादा टेक्निकल वगैरह चला गया। हाँ वेक्टर, हाँ वो उसका वो प्रॉब्लम है ना, उसको लगता है पूरी दुनिया को सब कुछ पता है, शुरुआत में ऐसे नहीं होता ना। 20% एनर्जी। यार अच्छा खाना खाना चालू कर दो, मतलब अच्छा एज इन नॉट कि जो अपना डेली इंडियन फूड है, मतलब मेरा मैंने तो नोटिस किया है कि उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ है, कि जिसमें प्रोटीनियस फूड है, कार्ब्स वगैरह मॉडरेट है वो सब। जो है ना उसका स्ट्राइवर लिस्ट का जो प्रॉब्लम है, मैंने भी वो फेस किया हुआ है। मैं भी छोड़ देता था कि एकदम शुरुआत से वेक्टर्स चालू कर दिया, नहीं नहीं चाहिए भाई, शुरुआत में नहीं पता होता है वेक्टर्स वगैरह। तो सिंपल यार, सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करो, वेक्टर्स वगैरह लगेगा ऐसे क्वेश्चन ही मत करो। टू सम वगैरह है उसमें, ठीक है, स्ट्रिंग एकदम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, पैलिंड्रोम वगैरह, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाते हैं ना क्वेश्चंस इंटरव्यूज में, वो खास करके फ्रेशर्स को। हाँ, अच्छा खाना मैगी, यस। या ये कल का, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी डिड yesterday. सो इन दिस क्वेश्चन इट वाज ऑलमोस्ट, इसको हमने क्या नाम दिया था, हमने मतलब इसका नाम है, इट्स लेवल लेवल बाय लेवल डीएफएस, लाइक
we go in. Usually the queue is in the BFS function, the other pattern, because I am creating the pattern, following the same patterns. I'm not reliable on whatever ChatGPT suggesting ki use this pattern, or the comment sections or solution discussion sections are saying use this pattern. No, uh, I have like marked it into the pattern that my brain can understand. uh, जॉब के बाद खाएंगे. या या ट्रू. सेम सेम. हमने भी जॉब के बाद ही चालू किया है. वेरी गुड इवनिंग अन्ना. गुड इवनिंग अन्ना. इट्स it seems like live streams are going well than before. Yeah, it's just a matter of time, no? Consistency and persistence works. इंटर्न ही लग जाओ. हाँ, हो जाएगा. देखो, एक आध चीज़ की मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं खुद भी वैसा ही हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ. आई एम नॉट different. I also get worried about so many things. Bro, I recently graduated this year. How should I prepare for development, for getting job and do impactful project in the fastest way? See, I'm following one mentor. Okay, I have one mentor right now who is guiding. He's working in some good FANG-based companies. So he said to me very good thing कि project your project should not be like creating value for 1,000 people or millions of people. No, get a simple project. He interviewed one of the guy who solved his parents some XYZ problem, okay, and he created an app specific to his parents problem. So that is a very impactful, and they got hired that person. So छोटा सा कोई project बना लो जिससे your concepts will be very well, like you will get to know like at least 10-20 concepts from that, and you would be able to explain that during the interview. And once you do that, try to keep all your interview as a fresher around that project, because as a fresher they don't have anything else to ask than your rather than your project. Okay, so they'll strictly focus on your project. Hey, somebody took my like back here. Please don't do these things. I'm seeing somebody doing this kind of thing, huh? Liking it and then taking the like back. Don't do this, bro. uh, Subhankar Ghosh, I hope I answered you. Well, you asked two things, bro. I recently graduated. Yeah, I should prepare for development, for getting job, and do impactful project in fastest way. Don't do any project just for the sake of getting job. Do it for yourself. जो मज़ा है ना एक प्रोजेक्ट बनाने में, जब तुम एंड टू एंड डेटाबेस के साथ फिर उसके बाद मस्त एपीआई वीपीआई बनाओगे, मस्त सा प्रोजेक्ट बनाओगे, उसके बाद जो फील आता है ना चलने के बाद, एक सिंपल सा लॉगिन पेज क्यों ना हो, हैशिंग वैशिंग के साथ तुमने लॉगिन किया, वो चला, मस्त लगता है. उसके बाद यू बिल्ड थिंग्स. सब्सक्राइब, मैं आपके साथ बैठूंगा डीएस. यस यस यस, आई एम इनवाइटिंग द पीपल टू सिट, यू नो. अगर तुम लोगों को ये है तो मैं मेरे बक बक कम करूंगा थोड़ी, बट या यू गाइस कैन join in. I start daily around 10 p.m. and sometimes I solve LeetCode and sometimes I build some छोटे projects. URL shortener, it seems you guys really liked it. I got so many views on that. इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहा, वही तो प्रॉब्लम है सर. हाँ यार, मैंने मेरे कंपनी में भी द क्या नाम है उनका, द एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर वाज सेइंग कि there are some problems going on in the market. Not exactly the problem. The companies are experimenting with the AI, and that's why they are like a bit in a dilemma to hire new people or use more or get more tokens. So they are trying to find a balance. But I know after this quarter, or maybe this quarter ending now, by the end of next quarter, na, the companies will have a good amount of data, because since last 6 months companies are using the tokens at vigorously, like at rigorously they are using the tokens, and now they will get the data how many features they have shipped using the tokens, how many features, good features, they used to ship before the tokens, before the AI models and all, and how many engineers that they laid off. Once they get the proper data analyzed, I know sure
they will know that hiring an engineer is more profitable for them rather than giving them the token. So tokenization will become somewhat with a boundary condition, just like your KPIs and all. It would be like that. Every engineer will get X amount of token, and they have to be sustainable during that. Okay, so wait, थोड़ा सा है. I know industry is good, but keep applying. No, I'm not demotivating anyone. Keep applying. हो जाएगा. बहुत अप्लाई करना पड़ता है. तुम्हारे नौकरी पे ना, तुम्हें 20,000 के करीब व्यूज आने लग गए तुम्हारे प्रोफाइल पे, तो तुम्हें जॉब मिलना आसान हो जाएगा. आई हैव सीन लाइक हम 10 लोग एक साथ ही जॉब स्विच कर रहे थे. तो we used to look at each other's profile, and it was a pattern. There was a pattern, like if your views start to increase from 1,000 to 2,000, 5,000, 10,000, someone's profile gets stuck at like 5 6,000, and someone is getting almost 30 40,000 just because he had good keywords, just because he had worked on good projects, just because he has worked on Docker, Kubernetes and all. He used to get more views. So that views matter, so you have to optimize your profile on the daily basis. uh, Interviews नहीं हो गया. I'm good with development with AI, and concepts are strong, but problem comes when you need to explain how it works and end-to-end pipeline and code. But that's easy part. No, no. I'm good with the development with AI. That statement says a lot about your development process, and I'll tell you that is a wrong way to go ahead unless or until you explain. Because see, company में भी जाओगे, even if you join any company and you generate a ton of code using the copilot, at the end it is pushed in front of your name only. Once you push it to the GitHub, it doesn't show generated by copilot, shows your name. So you are the responsible person for that particular piece of code, and if you are not able to explain that, then there is a problem. पर भाई कितने दिनों बाद, हेलो सर. लॉन्ग टाइम नो सी है. मैं यहीं पे हूँ. यू आर जस्ट एंजॉइंग योर वैकेशंस. दैट इज गुड, बट वेलकम बैक टू द स्ट्रीम. पर टीसीएस सैलरी इज इक्वल टू क्लॉड. क्लॉड प्रीमियम. या यार, ये सब का है ना. देखो, तुम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा ना. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एवरीथिंग इन लाइफ फॉलोज दैट पैटर्न. करंटली पता है, देर इज अ शॉवर ऑफ लाइक डिफरेंट AI models, and companies are sitting over here, you know. So they are trying to get everything possible. नया model आया, they are trying to use everything, but there will be a point, that companies will stabilize. Like, no, there will be few companies who need so many number of tokens. Their work is based on that. Maybe companies like I don't know, maybe TCS or some, और जो जिसको fast development चाहिए. But some companies जिनका product थोड़ा सा secured है, they'll try to be on this side. So ये होने में थोड़ा time लगेगा. We need data for this. गाइस यार, लाइक कर दो. मैंने अभी तक चालू नहीं किया है. आई शुडंट आस्क फॉर द लाइक्स, बट आई विल आस्क फॉर द लाइक्स. I'm more into DevOps. I'm more into DevOps and AI, but DS से पूछ लेते हैं तो लग जाती है. See, you are a fresher. You guys are a fresher. You can't bound yourself into one specific role. No, I'm only DevOps, or I'm only front end, or I'm only back end, or something like that. You don't know what will be your first job. You should be prepared, because you are not a chooser at this point, because it's a starting point. You have to get adjust in the whatever the role the company will provide, because as an engineer you should be able to solve any problem that companies throws at you. So तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है. तो आजकल कंपनी भले ही तुम्हारा रोल काम में तुम्हें नहीं लगेगा लीड कोड वगैरह, बट ये पूछते हैं. ये पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, बट दे आस्क. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. पर भाई डीएसए कर रहा हूँ सर. आज स्लाइडिंग विंडो किया, अच्छा लगा. मस्त 11 क्वेश्चंस किया अभी. आज ही स्लाइडिंग विंडो. अरे बढ़िया यार. स्लाइडिंग विंडो से हम ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं. स्लाइडिंग विंडो इज अ मस्ट पैटर्न दैट एवरीबडी शुड excel in, because there are lot many questions that we can solve using uh,
sliding window, you know. And distribute नहीं rate limiter में ही the I have just posted a poll over here. The rate limiter distribute the rate limiter system design question में ना जिसमें we will use this algorithm sliding window. That will be very fun. मजा आएगा वो करने में. Climbing the ladder matter I suppose. Getting internships, working little by ladder, so you get more preferences, more in action. Yes, yes. मेरे पहले जॉब में मैं बताता हूँ. I was doing Java back in the college. I made मतलब मैंने प्रोजेक्ट बनाया Java, Spring Boot and Angular पे. I got interviewed on Java and I got placed as associate full stack developer. My first task, my first project came in React. मेरे को React कुछ भी नहीं आता था. Then I started learning React and all. I did थोड़ा सा मुश्किल गया शुरुआत में लेकिन किया. Then वहाँ पे ऐसा था कि you have to run your own pipeline, you have to write your own pipelines, YAML files, deploy, see the you have to use Azure DevOps end to end. So these things I never learned in the college, but as you go forward, you have to like pick up the things. So as a starting person, you wouldn't know कि तुम्हारा काम क्या होगा. Yeah, keep climbing the ladder. Yes. Thank you, bhai. I also want a mentor. Can you suggest someone so that I get proper experience? यार लिंक्डइन पे है ना शुभंकर घोष मैंने भी यही किया है कि I pinged lot many people. The current mentor of mine is like my seniors, college का seniors, good friend. So मैंने थोड़ा सा बात करके कि हाँ he also wanted to mentor something. So वो मैच अप हो गया. तो he is like मतलब इतना नहीं, he gives like 15 minutes. मैं कभी क्वेश्चन पूछता हूँ उसको लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे ही आंसर्स. uh, the more you will miss around, the more you will find around. Yeah, ट्रायल एंड एरर ही लाइफ है भाई अपनी इंजीनियर्स की. तो uh, यश मिश्रा is like the greatest of the great philosopher. He is like the rare Pokemon in our chat on our channel. Okay. Uh, Atharva Gardway. Jobs will ask for experience, of course, because they expect the people to do internship before and will avoid training as much as they can. I'll tell you about the experience. If you will be able to create good project, not able to, if you create good projects ना, मतलब AI, I'm telling you, एआई का यूज़ कर करके तुम एक दो छोटे प्रोजेक्ट्स बना लो, ठीक है. जब तक तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे नहीं हो जाते, जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि एपीआईज वगैरह, इफ फुल स्टैक वाला प्रोजेक्ट कर रहे हो, एपीआईज कैसे काम करते हैं, हाउ कंट्रोलर्स वर्किंग, ठीक है, व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस, एंड एक छोटे छोटे एक दो प्रोजेक्ट बना लो एआई की मदद से, ठीक है. लेकिन जब तुम अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाओगे, ट्राई टू यूज लेस एआई इन दैट, और use AI just to improve your code, just improve your design patterns. What could be the best way to do that? If you followed my streams of URL shortener, you would have seen, or authentication. I have created a simple JWT authentication project end to end. In that, I have created a system of and good design patterns कि how to write the simple Java code. So do that. वो project तुम explain कर पा रहे हो, that वही तुम्हारा experience है. पर भाई सर डीएसए के साथ साथ मैं क्या करूँ, साथ में फुल स्टैक बैकएंड जावा में ही करूँगा. भाई यू आर 9-10 पॉइंटर का यार, मैं क्या तुम्हें सजेस्ट करूँ. एवरेज सीएससी इंजीनियर, सो यू वांट टू लर्न टू कोड आफ्टर गेटिंग द वर्क मीम. या यार पर क्या मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा यार, मैंने अपना डिस्कशन हो चुका है. यू आर डूइंग डीएसए नाउ दैट यू, तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है अभी, एंड यू आर ऑलमोस्ट 100, यू आर सॉल्व ऑलमोस्ट 100 लीड कोड प्रॉब्लम्स. स्टार्ट विथ एसक्यूएल, यही हमने डिस्कस किया था ना. एसक्यूएल वगैरह अच्छे से पढ़ लो. देर आर कंसेप्ट लाइक नॉर्मलाइजेशन, सारे टाइप के नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग, हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स इंटरनली. यू कैन go deep in that because indexing is a very good topic. Data modeling वगैरह, do this because this is a foundation of backend engineering. Rest of the things you can pick up, but SQL वगैरह मुश्किल नहीं है सीखने में. So I will suggest you do that, do data modeling, do learn all the
नॉर्मलाइजेशन, क्वेरीज वगैरह, जॉइंट्स वगैरह, ये सब का प्रैक्टिस कर लो. हैकर रैंक पे बहुत अच्छा है वो. आई यूज टू प्रैक्टिस ऑन ओवर देयर. अथर्व, रिएक्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इफ़ यू गेट फोर्स इनफ. या रिएक्ट, रिएक्ट इज़ वेरी सिंपल because I'll say कि you have to use only 2-3 major function features from the React. We don't use 100% React. Just states, use effects, इसमें ही अपना most of the काम हो जाता है. Then hooks बना के काम हो जाता है. And ज़्यादा से ज़्यादा अगर if you want global states, then you can use Redux and all. So that's it. But React में ज़्यादा code लिखना पड़ता है. If you no, I will refrain from using proficient vocabulary. Don't refrain yourself, bro. Use all of your advantages to get anywhere. If you are good at it, it's a very good thing na, that you know one language very well. Oh, okay. I guess I have answered all the questions till now. Let's start with this problem. ठीक है, ये मैंने क्या किया यहाँ पे. ये वाला थोड़ा सा यार अजीब प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल है. ठीक है. So in this question, I'll quickly explain. I'll read it first. The question is saying कि कल के वाले क्वेश्चन की तरह ये मैट्रिक्स, इफ यू गाइज हैव जॉइन द मैट्रिक्स वाला स्ट्रीम एंड देन रॉटन ऑरेंजेस, दिस टू थिंग प्रॉब्लम्स वी डिड. You are given m cross n grid rooms initialized with this -1 a wall. This is -1. These walls are like -1, and this gate is like 0. ठीक है. And then this is infinity. Why the fuck they are given infinity? I am not sure yet. I just started. So this is like called infinite, 2 raised to power 31 minus 1, which is this value. And if there is nothing, that means there is this value. Okay, so you can see in this input in these rooms, this -1 0, this like this, and we have to find wherever there is nothing or infinite. Oh, they are like playing with the philosophy over here. If there is nothing, that means there is infinite. So we have to calculate how much distance it would take us to reach the next gate. So in this case, the next gate is right beside it, so the distance will be 1. Okay, and for this one, 1, 2 and 3, distance will be 3, like this. Okay, so we have to replace the infinite with the distance, just like the matrix. In the matrix it was same. I was like confused about this part. कहाँ गया इसमें? This line, it was like help from a subscriber. This line ही मेरा गलत था. So I'll really have to figure it out in this problem. So in this problem we'll figure it out. For this one, similarly 1 and 2. So 2 is for this, and for this cell it is 1. For this cell, okay, for this cell we'll go right first and then first, or maybe we can go left, bottom, this. So there could be two answers over here. Okay, 1, 2 and 3. And there could be 1 and 2. So is it saying the nearest? Yeah, it's saying nearest, so we have to choose the nearest one. Is there are Parv is gonna take AI job. Parv is really brilliant student. If you guys don't know, he's one of the first subscribers, and he's like a hell lot of a brilliant guy. uh, he's just in first year, solved 100 questions and learning more. Okay, he's like Sharma ji ka beta. Okay, as I graduated recently and have knowledge of Java and advanced Java, because but seen very few jobs for Java fresher. So should I move in the MERN stack to get jobs as a full stack? In Java also you can get full stack jobs. Java में कम jobs है, ये तुम बोल रहे हो तो I'll say it's a wrong statement, bro. अगर because I have tested when I was switching the job right now, like 6 months back. We have like experimented with the different keywords. We experimented Java, Spring Boot, all keywords. We experimented in one profile. We used .NET के सब keyword, .NET Enterprise and all, and one में Node.js.
the Spring Boot ke the views that we get when we enter the Java and Spring Boot is too much. There is no at all comparison. There are so many companies, so many products, so many legacy products using Java, some kind of the Java version that they are using. So there are there are many jobs. Maybe try to optimize your profile. Don't learn a new skill. Double down on what you know and what you are good at. Okay. I'm planning to do masters, but still wanna dedicate at least 1 hour per day to DSA. Yeah, keep grinding DSA. I did that mistake. I got relaxed once I got placed, which I shouldn't have. But मेरी कंपनी में वैसे थी, 4 बार खाना खिलाती थी। सब कुछ क्रिकेट खेलने भेज रही है, सब कुछ दे रही है, जिम दे रही है, सब दे रही है, एंड आई वाज लाइक I've just reached, but no. I need to get internship within 4 months. You will get it, bro. अथर्व सी प्लस प्लस के लिए जॉब्स है, सी प्लस प्लस के लिए, बट दोज आर नॉट वेरी मेन स्ट्रीम जॉब्स, बट द वंस द जॉब्स विच आर इन सी प्लस प्लस आर लाइक हैव द लेजेंडरी स्टेटस। सी हमारे सर थे सी प्लस प्लस के व्हेन आई वाज डूइंग सीडैक, एंड भाई ही वाज लाइक अ लेजेंड। The company he was working in some OS based company, he was creating basically operating system, he used to tell us some, तब तो हमें कुछ घंटा नहीं समझ में आ रहा था, बट समझ नहीं आ रहा था लेकिन सुन के मस्त लगा। सो सी प्लस प्लस के जॉब्स आर लाइक मोर लेजेंडरी जॉब्स। सॉरी सर, एक काम आ गया था एसक्यूएल का, पढ़ रहा था मैं। ये ट्रांसलेशन बंद हो जाए यार। सॉरी सर, एक काम आ गया था एसक्यूएल का, पढ़ रहा था मैं, लेकिन उसके पहले आई लर्न हाउ डज बेसिक इंटरनेट एंड वेबसाइट। या यस, दैट इज़ अ गुड थिंग। आई गेस वी डिस्कस्ड ऑन वन ऑफ द स्ट्रीम्स दैट पार्ट। फ्रंट एंड करना चाहिए मुझे या फिर डायरेक्ट एसक्यूएल एंड बैक एंड पे जंप करूँ? फ्रंट एंड अभी मत करो, फ्रंट एंड में घुसोगे ना, इट्स वेरी don't touch JavaScript yet. I'll suggest you try to learn a language, try to excel in these things, any backend language, the Java for you and SQL वगैरह, because those are very design pattern. uh, these languages follows very good design patterns, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, oops वगैरह अच्छा होगा। तुम फ्रंट एंड में जाओगे ना, तुम्हें कुछ पैटर्न ही नज़र नहीं आएगा। रिएक्ट करो, एंगुलर करो, देर आर नो पैटर्न्स। वंस द कोड बिकम्स टू लार्ज, इट बिकम्स वेरी अनरीडेबल एंड यू विल गेट कंफ्यूज एज अ बिगिनर। सो आई विल सजेस्ट go with the backend first. Python TTR, I'm not sure about Python much. Okay, so for this problem, as I was explaining this, let me grab this boilerplate code. I'll blabber out whatever the things I know. Okay. So whenever these things are given, so we usually first get rows, which is like rooms dot length. Okay, and then int columns is equal to rooms 0 dot length. Apologies for my handwriting, but if I have to write fast, I can do only one thing at once, at least either write well or either write fast. Okay, and then in this type of, like, it's a level by level DFS, level by level BFS. In these types, we have to create the queue in the beginning. This is like the uh, standard pattern that I'm trying to get my head around. Okay, and new, and I'm mostly using array deck because I have seen this performs much better than the normal queue. Okay, and then now we have to start iterating from this node. Go here, this, and everyone. So for that we usually use this double for loop, I0, I less than this rows, and I plus plus. Similarly for j, for column, for j, int j is equal to 0, j less than columns, and j plus plus. Okay, and this one we have to think like, what is the source? Okay, the pattern that I have figured out by solving the last two problems, matrix and rotten oranges, I have seen that we have to add only the source
to the queue. What is source? Source is like the starting point in simple words, like from where we have to check. In this one, we have to check from the infinite. Okay, so we have to check if it's infinite, if the current cell is infinite, then only add to queue. Okay, so this much is from the past questions that are solved. So for example, for this one, rooms I j is equal to I'm not sure infinite integer dot max something लेना पड़ेगा is I'm writing infinite for here or I can use the symbol. Okay, symbol use लिखना cool लगेगा तो we'll use infinite ई साला infinite. ठीक है, if it is infinite then in that case we will add that uh, particular row column coordinates to this queue. Okay, ये मेरा अरे यार मेरा मॉनिटर हिल गया साला. ओके, तो यहाँ पे अपने को ऐड करना है न्यू इंट array and add this I j. This is the syntax to add this, and we will mark as of course we need a visited array over here. So boolean uh, visited is equal to new boolean of size this rows and columns. ठीक है, and this we will mark this as visited. I'll explain you as I'm going. I j is equal to true. This much though I know from the past question. Now the question is the BFS. Where do we exactly do the BFS? Right here we can do the BFS as it seems. सर वैसे कोडर आर्मी यूट्यूब चैनल ने स्प्रिंग बूट का एक वीडियो सीरीज किया स्टार्ट किया है जस्ट अभी ऑन प्रोसेस है. Should I watch that? I have literally zero idea for backend. I just know what backend is. देखो मैंने कैसे किया था. तुम्हें जावा पता है क्या? एटलीस्ट मेरे को ये बताओ. मतलब there are two parts in Java, like basic Java and advanced Java. Have you done both of these? Tell me that if yes, if you know both of these things, then you can hop on to learning the Spring Boot. Or I'll suggest now that you are a fresher, you should start uh, from the basic. Like Spring Boot is the most evolved library. No. Then you should know advanced Java, bro. Perf. There are two major sections in Java. There is basic Java and there is advanced Java. If you haven't touched advanced Java, uh, do advanced Java first. Don't do running. तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, एक चीज समझ लो. अनिरुद्ध गेमर, हेलो हेलो ब्रो अनिरुद्ध. तुम्हारा गोवा ट्रिप खत्म हो गया या अभी भी यू आर इन गोवा ब्रो? Your yesterday's message was like hell funny bro. Per you do the advanced Java first. Don't overcomplicate your life. uh, जावा हमने जब जावा सीखा था, स्प्रिंग बूट सीखा था, तो इट वाज लाइक हमारे टीचर ने हमें बेसिक से सिखाया था. मतलब स्प्रिंग बूट इज़ अ इवॉल्व वर्जन. उससे पहले सर्वलेट्स वगैरह है. यू नो there are servlets. Learn those servlets. Using only servlets you can create a complete backend project. उसके बाद आया like historically I am saying, then उसके बाद शायद हाइबरनेट आया. ठीक है, हाइबरनेट से भी तुम पूरा बैकएंड बना सकते हो. हाँ, देयर वर प्रोजेक्ट्स दैट क्रिएटेड दिस थिंग्स. देन उसके बाद आई गेस स्प्रिंग आया, स्प्रिंग एंड देन स्प्रिंग बूट आया. स्प्रिंग एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, तो स्प्रिंग बूट इज़ द मोस्ट इवॉल्व्ड फीचर. अगर तुम सीधा यहीं पे जंप करोगे तो तुम्हें बस पता चल, क्योंकि स्प्रिंग बूट हैंडल्स एवरीथिंग फॉर यू. What servlets do, what Hibernate does for you, Spring Boot does everything for you. You wouldn't even know what's going on inside that, inside when your code runs. You should know as a beginner. You should be focusing on how it really works because you have time. That's why I'm suggesting. If you hadn't time in your hand, anybody can completely start with the Spring Boot. But you have time, you go
फ्रॉम दिस लर्न सर्वलेट साइबरनेट स्प्रिंग एंड देन स्प्रिंग बूट। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम्हारा टर्मिनल रन होता है ना, इट shows everything like hibernate is starting, the servlet starting, been injected, all these concepts. So you can go like that. Okay. Uh, yeah. Thank you so much. Java advanced topics like multi-threading, yeah, generics, collection, frameworks, lambda function, yeah. हाँ, और भी है उसमें, और भी सारी चीज़ें हैं। ब्रो मैट्रिक्स के बता दो कहाँ से पढ़ूँ। ब्रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्वेश्चन बोल रहे हो, ये मैट्रिक्स मतलब इन रेफरेंस टू क्वेश्चन दैट वी सॉल्व्ड और व्हाट? मैं नहीं समझा था कोडर का है, सॉरी ब्रो। सर कहाँ से पढूं, मैं रेडी हूँ पढ़ने के लिए। मुझे बस एक अच्छा रिसोर्स चाहिए एंड एक रोड मैप चाहिए मैं फॉलो। बेसिक जावा एडवांस जावा के लिए यार वो बुक है, फेमस बुक है, तुम गूगल कर लो। दो पार्ट्स है उसके, वो बुक रेफर कर लो, क्योंकि पता है जब भी तुम्हें अच्छे से एंड टू एंड सीखना है ना, बुक इज़ ऑलवेज द बेस्ट रिसोर्स अदर देन फॉलोइंग एनी वीडियो और ये, बिकॉज वीडियो एंड ऑल दे हैव द बेस्ट knowledge given in short time, but the book starts from the basics and end at the proficiency level, so book makes you a really good engineer. So वो बुक का नाम मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, अभी मेरे पास शायद होगा वो किताब इन माय बुक शेल्फ, आई हैव टू लुक फॉर इट। अरे का टू सम्स उठाया बट वो बॉयलर प्लेट वेक्टर में देता है, सी प्लस प्लस में कर रहे हो ना तुम। तो दूसरा दूसरा प्रॉब्लम कर लो यार, हम बताए क्या तुम्हें, कौन सा प्रॉब्लम करो। पैलिंड्रोम नंबर कर सकते हो दोस्त। अथर्व तुम पैलिंड्रोम नंबर ये करो क्वेश्चन, इफ यू आर लिसनिंग। कहाँ गया मेरा लाइव चैट? पैलिंड्रोम नंबर करो, इंटीजर वाला पैलिंड्रोम, और वो उसमें कुछ तुम्हें एक्सटर्नल चीज़ नहीं लगेगी, तुम्हें बस लूप वाइल लूप और इसमें सोचना है। और हो जाएगा, इसको छोड़ो फिर, वो वेक्टर वगैरह दे रहा है जो दिमाग ज़्यादा चाट रहा है शुरुआत में, छोड़ दो उसको। यू स्टार्ट विद द लीस्ट पाथ ऑफ रेजिस्टेंस whenever you are starting. Don't worry, bro. I'm in home. Yeah, good to good to hear that. Uh, tell us more about your startup, bro. कुछ कल के बाद, कल तो तुम गोवा में थे, तो of course there wouldn't be any updates on that. Basic जावा में क्या क्या आता है? If you can tell me that क्या क्या आता है, I can verify that I have completed the basic Java. Let me Google that. सारी चीज़ें मैं वो बुक ही मैं गूगल करता हूँ ना। जावा मेड इजी नाम है उसका, वो बहुत पॉपुलर बुक है कॉलेज के लिए। हाँ, इसमें मोस्टली देखो, जो मेरे को याद है ऊप्स कंसेप्ट वगैरह जावा की है, फिर तुम्हें उसका कंपाइलर के बारे में वगैरह पढ़ना होगा, जे आर ई जे डी के क्या है, जे वी एम क्या है, और उसके सिंटेक्सेस, बेसिक सिंटेक्स वगैरह जो हम लीड कोड में यूज़ कर रहे हैं वही बेसिक सिंटेक्स है, वही बेसिक जावा है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसमें डेटा टाइप्स में है ना थोड़ा सा, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना डेटा टाइप्स वगैरह होता है, तो इसमें रैपर क्लासेस वगैरह है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स, ये सब पढ़ लेना। फिर इसमें तुम ये देख सकते हो कि ये ईफ वगैरह फॉर लूप, ये तो बेसिक तुमने बोला, ये तुम्हें पता है, मतलब सारे कंट्रोल फ्लोज बेसिकली। और क्या आता है उसमें? आ, अगर लीड कोड क्वेश्चंस तुमने जावा में किए होंगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे स्ट्रिंग बिल्डर वगैरह, ये सब चीज़ें भी आती है। स्ट्रीम्स वगैरह, हाउ टू यूज स्ट्रीम्स जस्ट लाइक पाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट, तो वो सब चीज़ें आती है। यस, या अथर्व, या डू दैट प्रॉब्लम, और वो हो जाएगा तुम्हारा अभी, हम जब तक स्ट्रीम में। सर बुक का नाम भी बता दो इफ़ पॉसिबल, या दैट इज़ जावा मेड इजी समथिंग नाम है उसका। यहीं पे मैं गूगल कर सकता हूँ ना, जावा मेड
इजी बुक, क्या नाम था उसका, लेट मी डू दिस, बेस्ट बुक्स फॉर जावा, उसमें लिस्ट आ जाएगा, बेस्ट बुक्स फॉर जावा लर्निंग, हेड फर्स्ट जावा या हेड फर्स्ट जावा। और हमेशा फॉरेन ऑथर के बुक्स रेफर करो, ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। और क्या लिस्ट दिया था इसने, जावा बिगिनर्स गाइड, और एक हमें जो दिया गया था वो भी बुक अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेनेटरी था। खुल जा भाई, मेरे को मेरा वाईफाई का बैंडविड्थ बनाना पड़ेगा, 50 Mbps इज़ नॉट सफिशिएंट बिकॉज यूट्यूब कंज्यूम्स 40 Mbps while streaming on two different outputs। वो सॉल्यूशन में अपने गिटअप के रेपो में डालना चालू करूँगा। हाँ, इट्स गुड, वो अच्छी बात है। कमेंट्स वगैरह सा ऐड कर देना उसमें, तो अच्छा तुम्हारा ये बन जाएगा। अरे क्या, खुल जा भाई, इंडेक्स कहाँ है इसका। हालांकि मैंने दूसरा की बुक रेफर किया था, बट दिस इज़ वेरी पॉपुलर बुक, हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मेथड्स। इसके खास करके इसमें अगर एक्सरसाइजेस होगी ना, वो तुम सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। वेरी ग्राफिक स्टोरी, जीयूआई, सेविंग ऑब्जेक्ट्स, मेक कनेक्शंस, इसमें अलग तरीके से पढ़ाया गया है, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर बुक है। ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता ही होगा ये बुक, तुम्हें चाहिए यूआरएल मैं चार्ट में डाल देता हूँ, देखो यूज़फुल है तो यूज़ कर सकते हो इसको। आ, या हाँ, मतलब बोलते तो यार, मैंने एक दूसरा बुक ये किया था, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ब्लैक कलर का बुक है वो, कोड जावा, ये बुक देखे क्या, वो बुक भी अच्छा था जो मैंने रेफर किया था। ये वाला मैंने नहीं रेफर किया, लेकिन बहुत लोगों ने ये बोला हुआ है। नॉट दिस वन। हेड फर्स्ट बहुत लोग सजेस्ट करते हैं बुक, मैंने शायद किसी को दे भी दिया है वो बुक, मेरे पास नहीं होगा अभी, मैं बताता हूँ पर तुम्हें ना, I'll get back to you। वो बुक का नाम जो मैंने रेफर किया था वो अच्छा बुक था। आ, इसमें बेसिक जावा दे रखा है, हेड फर्स्ट जावा, इसमें तुम ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जावा का इंटरनल्स, ये सब ना सीख सकते हो। जो तुम्हें पता नहीं है वही पढ़ो, शुरुआत से एंड तक पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। जो एक आध, पहले एक काम करो, एक कोई भी टॉपिक तुम इसमें से उठा के ट्राई कर लो, तुम्हें अगर सच में समझ में आ रहा है तो देन यू कैन रेफर टू अदर। आई विल गिव यू अनदर बुक, अभी बहुत साल हो गए वो किताब पढ़े मेरे को, तो नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं वो देता हूँ, उसमें कैसे एक्सरसाइज वगैरह दे रखा है, जो हम कन्वेंशनल इंडियन वे ऑफ स्टडिंग है, तो उसके लिए वो बेटर है। मैं देख के रखता हूँ, मैं तुम्हें कल नाम बता दूंगा उसका, ठीक है। हम बैक टू द प्रॉब्लम यार, बहुत स्लो जा रहे हैं हम आज। खाना भी नहीं खाया मैंने, मेरे को स्ट्रीम ख़त्म करके खाना खाना है। सर इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड, सर बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। रुको अभी कुछ मत करो, मैं बताता हूँ तुम्हें फिर, ठीक है। बुक का नाम लेके, और तुम क्या कर रहे हो, पर पता है तुम्हें फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया तुम्हारा, और ट्राइंग टू डू लॉट मेनी थिंग्स, एक ही चीज़ लेके उसको अच्छे से कर लो ना। अगर तुमने एसक्यूएल स्टार्ट किया तो उसको कर लो, कोई यूट्यूबर ने जावा सीरीज स्टार्ट किया है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वो करना चाहिए। डोंट फील फोमो अबाउट दिस थिंग्स, तुम्हारे पास टाइम है, यू डू योर थिंग्स गुड। I have already implemented several features in my startup, including video streaming, live streaming, nice.
and an AI based content scanning system to prevent content policy violation. Oh bro, that's nice यार. Teachers cannot upload copied or unauthorized content. ये सब बनाया तुमने? Similar to how videos can be stolen and re-uploaded on platforms like YouTube with voiceovers, my application is designed to बाप रे बाप. बढ़िया भाई. Content and protect original creators. बढ़िया है भाई. इंडिया से यूट्यूब. अरे यार, back to these problems, you know. uh, एक सेकेंड. हम कल वाला ये रेफर कर सकते हैं थोड़ा. ठीक है. तो इसमें हमें क्या रिटर्न करना है? We have to just update the so it's a void. Fill each room with the nearest distance. So will it, let me see how the output is working over here. Okay, it's checking output. अपने को कुछ नहीं करना है. We just have to manipulate the bit. Okay, so that is fine. So let me write this much code जो अपना है. So let's write uh, int rows is equal to rooms dot length. मेरा is equal to बटन खराब हो गया है कीबोर्ड में. And columns. अरे okay, then let me create the queue quickly. It will be of type integer array queue. अरे यार, queue. Let me fix this. Just a second. मैक बहुत परेशान करता है यार कनेक्टिविटी में. Okay. QE is equal to new array deck. Okay, and then we'll loop quickly int I equal to 0, I less than rows. ये शायद मैंने उस पर एक्सकैलर ड्रॉप ये नहीं लिखना चाहिए. अब इसको मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं. इतना तो मेरा हो गया है. I should focus on the main logic. j less than columns and j plus plus, and then इसके अंदर we just have to check this time like rooms if that is an empty room. Okay, I and j. And how we gonna check for the infinite? Is it like integer dot max? Let me create one int inf is equal to integer dot max. I guess it's so we'll use this as infinite. Okay, so if is equal to infinite, then in that case add this particular element to the queue. So but not element but the its coordinates. So we have to add it like this: new int array and the values I comma j, and mark this visited. We haven't created the visited array, so let's create it quickly. The 2D visited is equal to new boolean rows and columns. ठीक है. And in this one we will mark visited I slash j is equal to true. ठीक है. And we'll do BFS from here only. ठीक है. There is no other option to do the BFS. So for this BFS we will pass the rooms and we'll pass the visited array, and then we'll pass I comma j if it is it required. Okay, and then infinite so we can create over there. So we'll think ki is I and j will be required or not.
Okay, then let's write the actual function, BFS function. So it will be again of type void BFS, and in this one the int to the array rooms, and then boolean visited, and then int row, uh, int row, int column, and also int rows and int columns. These two things we will require over here. So let me pass those as well, columns. Okay. And then after that, in this one, what should be the first thing that we should be checking over here? If it is infinite, okay, so any new messages? I got few. कंटेंट एंड प्रोटेक्शन और या ये मैंने पढ़ा था, एसक्यूएल कर सकता हूँ सर मैं अच्छे से एकदम, आई हैव अ गुड रिसोर्स फॉर दैट, पहले वो कंप्लीट कर दूँ एंड देन आई विल गेट यू बैक टू, या यस, दैट्स द प्लान दैट आई एम आल्सो आस्किंग यू टू फॉलो, डू दैट। देखो अपने हाथ में अभी जो है ना उसको अच्छे से करो, ठीक है, उसके बाद तुम नई चीज़ पकड़ लेना, लेकिन कीप योर कंप्लीट माइंड ऑन दैट ओनली। सो गुड डिसीजन, फोकस ऑन द एसक्यूएल। एसक्यूएल अच्छी चीज़ है, आसान चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ है। Most of the core development is already complete. At this stage, I mainly need to launch the platform and invest in reliable hosting and infrastructure. I paused development for a while, but yeah, do that. Project is largely ready and only requires final deployment and scaling. Good, 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 good. Use Docker, it will auto scale. Docker and Kubernetes if you can. It will help you in the deployment. Uh, हमने मैट्रिक्स में क्या किया था, डायरेक्शंस वगैरह तो ठीक है, तो सीधा हम चेक कर रहे हैं कि वी आर गोइंग इन, वी आर चेकिंग फॉर दिस। पहले तो हम पोल आउट करते, ठीक है, यहाँ पे वी आर गोइंग, बेसिकली वी क्रिएटेड अ क्यू, ठीक है। Okay sir, I'll come back after completing SQL in depth. Till then, bye bye. Yeah, bye bye. All the best to you as well, and I hope you like the stream, bro. Don't go without liking the stream. And तुमने लीड कोड का कितना हो गया? लास्ट टाइम आई checked on you, it was like 100 questions. So this is like 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Okay. The first one that we'll be pushing over here is like 0, 0. Okay. Then we have like 3, 0. Sorry, 0, 3. It is. Then we have all this 1, 0. ठीक है, 1, 1, 1, 2. Then what else we have? 2, 0, 2, 0. Then we have 2, 2, 2, 2, and then we have 3, 2, 3, 2, and then we have 3, 3, 3, 3. So all these things are in our queue. So first अपने को तो queue का size भी लेना पड़ेगा. Get this size. That is the first thing. Direction का ये बना लो, उसका size ले लो. Start iterating on this and start polling out एक एक. तो इसको poll करेंगे, मतलब इसको बाहर निकालेंगे. Get this element out. तो अपने को R3 मिलेगा और C जो है मतलब for initial row initial column ये मिलेगा. फिर अपने को we have to run the directions वाला loop, and in this loop we have to calculate the new row and new column. Okay, and this new row new column हम find out कर लेंगे. then उसके बाद अपना जो rooms है, rooms का rooms with new row new column is equal to, we have to use this particular line. So mat rc and plus 1, because this is how we'll calculate and put the distance. So क्या था, जो भी node R and C plus 1, ठीक है, सॉरी रूम्स है ये, ठीक है, I understood what we have to do in here.
सर लाइक तो आपने लाइक तो आने से पहले ही कर देते, अरे बढ़िया यार, थैंक यू सो मच। चेक कर लो सर लीड कोड अकाउंट फॉलो या फिर अनफॉलो, और फिर फॉलोइंग पे होगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा तुम्हारा अकाउंट है मेरे पास ब्रो। यहाँ यहीं पे है सब्सक्राइबर। इज इट यू कोडिलो? नो इट्स नॉट यू। ये श्री साई का है। तुम्हारा प्रोफाइल नहीं है शायद यार यहाँ पे। तुमने शायद दिया नहीं था प्रोफाइल, या मैंने बुक मार्क नहीं किया। मेरे पास ये सारे प्रोफाइल्स है, तुम्हारा प्रोफाइल नहीं है इसमें। चेक कर लो सर, लीड कोड अकाउंट फॉलो या फिर फॉलोइंग में। लेट मी चेक। फॉलोइंग में बाइनरी, या बाइनरी परफ आई हैव। सब्सक्राइबर्स प्रोफाइल डन। 129 ब्रो फॉक बहुत बढ़िया। देयर विल बी रिव्यू टू। रिव्यू भी हो जाएगा, यस। ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं किया है वैसे, एनजीएल रिवाइज किया है मेनली। तो आज से ही न्यू क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए हैं मैंने। नाइस। पर मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के पीछे भी मत पड़ो, ठीक है? जो भी तुम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, नोट्स बनाओ, ताकि कभी भी फ्यूचर में तुम है ना। मैंने मेरे सर के, मतलब सर क्या, वो ऑलमोस्ट सेम एज का था, वो पढ़ा रहा था। आई हैव सीन हिज नोट्स एंड ही रोट सो फकिंग गुड नोट्स, एंड ही टीचेस सो गुड। कोई भी तुम कंसेप्ट पूछने जाओ, ही लाइक गॉड लेवल इन दैट, बेस्ड ऑन हिज नोट्स। तो तुम अभी कर रहे हो तो अच्छे से करो, इट्स नॉट अ रेस। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। फर्स्ट ईयर में हो, यू हैव अ गुड amount of time, do all these things very अच्छे से। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल। और ये क्वेश्चन कर लिया है तुमने? बाप रे, बढ़िया यार। फ्रूट्स इनटू बास्केट एन आवर अगो, मिनिमम साइज सब है ये स्लाइडिंग विंडो फॉर दिस सब है। बहुत बढ़िया यार, तुमने क्या क्या किया है इसमें। कैन आई सी द कंप्लीट प्रोफाइल? सी प्लस प्लस, बढ़िया यार। क्या क्या बैचेस है तुम्हारे पास? 50 days बैच, नाइस। ये तो मेरे पास भी नहीं है। नाइस पर्फ। पर्व इज द फर्स्ट पोकेमोन। एनजीएल इक्वल टू नॉट गोना लाई, ओके ओके। ये सब चीज़ें मेरे को पता नहीं है। एनजीएल है फॉलोइंग 16 फॉलोइंग, यू आर 16 फॉलोइंग, नाइस। Can you create a complete course series focused on 3.js and backend development? I want to learn how to build interactive 3D websites and applications with 3.js and see। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, इस चैनल पे मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट टीचिंग, और मेरे को किसी को कुछ पढ़ाना भी नहीं है। आई एम हियर टू लर्न the things, and I'll build the things along the way. You can see and see if you can learn out of that, because I'm that kind of a person. I learn whatever the fuck I get my hands on, not just the coding. I have learned different things in my life. I know almost 14 15 different types of softwares. Not just no, I'm like good at doing all those things. If you guys have seen used extrusion, like when I used to work on a Baha project, like जब हम गाड़ी बना रहे थे उसमें, I have learned so many things, excelled in so many things। उसके बाद भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, then there are different skills, artistic skills, Rubik cube skills, ये सब। सो मेरा वो स्किल है मेरे में कि आई टेक एनी स्किल I learn, because I strictly follow the policy, like the rule, 20 hours rule and 10,000 hours rule. There are many skills which I can quickly learn
by spending 20 hours on anything, and then I'll analyze that कि ये कितना value add कर सकता है मेरे life में. So based on that I try to give some more hours to that, maybe 300 400 max अगर if it has very low value. And there is one skill, that is coding, on which I'll spend my 10,000 hours in my life. That is almost 9 to 10 years, because after spending 10,000 hours you get a breakthrough, and that is what the stats says. If you guys have read the Outliers book by the Malcolm Gladwell, and that is the theory that I tend to follow. So no teaching over here, only learning. And I'll come up with the other things as well. The tokens ka video I'm making, ki how I'm learning the tokens and all, and I'll make some documents on that, and I'll also share that. So I follow different strategy, bro. So if you are subscribing for some tutorials and all, that's never gonna happen over here. I'll explain what I did, okay, how I did all the questions or projects, but it won't be a tutorial for say. ठीक है. Now I understood this. So in the BFS, what I have to do is like, uh, let me write the BFS function quickly. So BFS, in this BFS we are taking the rooms, we are taking visited, we are taking I, J, and rows and columns. Okay. And after this we have to first take the size. Int size is equal to q. We haven't passed the q, motherfucker. q कौन पास करेगा? q का size q ue dot size. And इसके ऊपर अपने को uh, because these are many elements in the queue, so we have to run the loop on that, which is the primary loop. So int I equal to 0, I less than this size, and I plus plus. ठीक है. And in this one we have to poll this element out. So poll this element, so we will get int current node is equal to q dot poll, ue dot poll. Okay, this will give us this node, and from that we will get the current row and column. Okay, usually we name it as R and C. This is like node 0 because it's x and y kind of thing, and it's node 1. Okay, these things, after getting these things, we have to run the actual array. Like we got this element, for example this is a grid. Okay, we got this element, उसके ऊपर अपने को checking all directions, so it's a level by level DFS BFS. तो अपने को सारे directions में check करना है. So for that we have to like create the directions array. I'm not gonna create the right directions array over here. While writing the code I'll write that. On the directions array we have to iterate and then take the new row. ठीक है, new row and new column. And what is this new row and new column? It is like the loop will give us all the four things, because this directions has like -1 comma 0. Okay, 1 comma 0, then 0 comma -1, and 0 comma 1. All these will be there. So we will do r plus direction 0, like it will be the first top, and then 1. Okay, this top, right? And then after that there are some few conditions, the standard conditions I'm not gonna write here. The one which I need to write is like it should be not visited. Okay, we are marking that visited, so new row and new column shouldn't be visited. And what else? uh, it should be infinite, I guess. It should be, yeah, it should be infinite. So rooms, uh, this new row and new column, it should be infinite, equal to infinite. Okay, if that is so, then we will go inside this if, and first though we will add that current new row and this. So new int, जो भी अपना न्यू रो और न्यू कॉलम है वो ऐड करेंगे. ठीक है. एंड देन उसके बाद हम उसको विजिटेड भी मार्क करेंगे, विजिटेड न्यू रो एंड न्यू कॉलम. ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग अगेन. तो इसमें से वी आर पोलिंग दिस आउट. वी चेक्ड, वी डिड ऑल द डायरेक्शंस ओवर हियर, एंड देन उसके बाद we checked if it's infinite, then only we, and not visited, then only we moved inside.
ठीक है। एंड उसके बाद अंदर जाने के बाद अपने को उसको मैनिपुलेट करना है उसी ग्रिड को। तो वो मैनिपुलेशन का ये था कि जो भी करंट पोजीशन पे है हम, उससे एक डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है। तो दैट डिस्टेंस इज लाइक रूम्स। जो ये नोड है अपना, जो इनिशियल जहाँ से इनिशियल किया है अपन ने, सपोज इस डायरेक्शन में गए उधर प्लस होगा, इस डायरेक्शन में गए उधर प्लस होगा। तो दिस इज द न्यू डायरेक्शन एंड वी विल जस्ट मैनिपुलेट द करंट विथ +1, ठीक है। एक बार में हो रहा है तो लेवल बाय लेवल वी आर गोइंग, दैट्स इट आई गेस। सो इतना हम करके ट्राई मारते हैं, ठीक है। पेन पेपर का काम इज डन फॉर दिस क्वेश्चन तो एटलीस्ट। द क्या बोला है यार, सो मेनी मैसेजेस, यस अच्छे से कर रहा हूँ। फॉर एपीआई हैंडलिंग एंड कंटेक्स्ट मैनेजमेंट, for API handling, databases, and content management, the course should also cover how to convert these projects into mobile application and desktop application. I would like that entire course to be. Uh, I said no courses. Project based with step-by-step explanation and practical examples using 3JS, JavaScript, Node.js, Express related technologies. अनिरुद्ध, मैंने बोला कि नो कोर्सेस, आई नेवर मेक कोर्सेस। वो मेरा स्किल ही नहीं है कि मैं कुछ सिखाऊं यहाँ पे। स्लाइडिंग विंडो के सवाल सवाल है आज के सारे, अदर दैन बेस्ट टाइम टू बाय। एंड हाँ, बेस्ट टाइम टू बाय सेल स्टॉक मैंने देखा तुमने किया, वो भी 100% एक्सेप्टेंस के साथ, बीट्स 100%, विच इज़ नाइस। डन विथ पैलेंड्रोम, आई जस्ट लर्न वेक्टर एज वेल, साइड 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 बाय साइड वाई टू। गुड ब्रो। 2 मिनट पहले, 2 मिनट नहीं 15 मिनट पहले तुम रो रहे थे यार, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, किया ना। सही क्वेश्चन पिक करो, तुमने किया, कॉन्फिडेंस आ गया, अभी देखो तुम पॉजिटिव हो गए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम ऐसे ही कर लोगे। इज देयर नीड ऑफ लर्निंग सिस्टम डिजाइन फॉर फ्रेशर, इफ यस रिसोर्स फॉर फ्रेशर। तुम्हें बहुत ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन आने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक की तुम्हें यू शुड नो हाउ टू स्केल एंड ऑल। यूट्यूब पे इज़ वेरी गुड सीरीज। और हाँ, सिस्टम डिज़ाइन का है ना, एक बुक का है अपने पास लिंक। ये बहुत ही अच्छा किताब है, रीड दिस। उसके पहले 3-4 चैप्टर बहुत ही अच्छे से दिया है, बहुत ही मस्त है, ये किताब पढ़ लो भाई। इसमें सिस्टम डिज़ाइन शुरुआत का है ना, बहुत ही अच्छा है। एक 8वें चैप्टर तक कर लो, डिज़ाइनर सिस्टम यूआरएल, यहाँ तक तुम करोगे तुम्हें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ये एग्जाम्पल कर लो। मेरे चैनल पे मैंने यूआरएल शॉर्टनर बनाया हुआ है, तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, यू कैन लुक इनटू दैट हाउ इट इज़ क्रिएटेड, कोड भी है उसका, तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा। एंड देन कोई भी एक जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो कर लो, बहुत ही अच्छे से दिया है इसमें, हाउ टू हैंडल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड और ये सब, इट्स वेरी नाइस। मेरे को हमेशा यूट्यूब वीडियोस और इससे ज़्यादा है ना ये अच्छा लगता है किताब पढ़ना। सो लेट मी राइट दैट। तो और भी कुछ पूछा है, कर लूँगा भाई, गाइड करो आप ही। यस, तुम्हें अगर पता नहीं होगा अथर्व, आई कैन रीड द डिलीटेड मैसेजेस। I have this plugin. Improvements I can make in terms of design, user experience, and overall quality. Yeah, use Codex, bro. Codex can be your architect in there. कर लूँगा भैया, आप ही गाइड करो। यस 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 सर। जो मेरे को आता है ना, मैं वो किसी को बताने में कभी क्या बोलते हैं हिंदी में शब्द है ना उसको, हिच हिचकिचाता नहीं। मैं तो पूरा ओपन बुक हूँ, लेकिन मेरे बुक में ही पेजेस कम है भाई। या हम ये कर रहे थे ना, तो लेट मी फर्स्ट क्रिएट वो डायरेक्शन का एरे अपने को बना ही लेना पड़ता है। तो डायरेक्शंस में बना लेता हूँ क्विकली। डायरेक्शंस इज इक्वल टू ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। It will be, top will be like 0 and -1, bottom will be like 0 1, and then left will be 0 comma minus, oh sorry, -1
comma 0 and then 1 comma 0 will be the right. Okay, and after that we'll start because we are not passing the q over here. q कौन मेरा चाचा के पास करेगा क्या फंक्शन को? q भी पास करना है लाला. q पास किया हमने. ठीक है. श्री साई ब्रो ब्रो वेलकम वेलकम बैक. भाई लिख दिया. भैया साउंड्स फॉर्मल. भैया साउंड्स फॉर्मल या कोई नहीं ब्रो. भाई लिख दिया भैया साउंड्स या कोई इशू नहीं है. क्या लिखा था फिर भी तुमने? पहले कर लूंगा भाई. यस. सीएन के लिए रिसोर्सेस. सीएन के लिए तो आई डोंट हैव एनी रिसोर्स मार्क्ड. ठीक है. लेट मी. बहुत टाइम मैंने ये कर लिया. इसको मैं कर लेता हूँ क्योंकि अभी एक बार भी कोड रन नहीं किया. एक पहली बार रन करेंगे तो उसके बाद 10 इश्यूज आएंगे. वो सॉल्व करना है अपने को. इज एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी वो हम चेक कर रहे हैं. उसके बाद विल गो इन एंड देन इंट साइज इज इक्वल टू क्यू का साइज. क्यू इसका साइज ले लेते हैं एंड देन उसके ऊपर अपने को इटरेट करना पड़ेगा ऑल द क्यूज बिकॉज द क्यू इज नाउ फुल्ड with all the cells where the space is infinite, where the cell value is infinite. So int I equal to 0, I less than size and I plus plus. ठीक है. एंड देन उसके बाद अपने को करना है पोल एलिमेंट. सो int array current node. Okay, and this node will be QUE dot poll. मैंने आज खाना नहीं खाया क्योंकि 11:30 बजे तक मेरे को नींद आता है. तो आई थॉट कि मैं पढ़ाई कर लूँ, काम कर लूँ अपना, और उसके बाद खाना खाएंगे. देन दिस एंड देन द करंट रो एंड कॉलम. सो नोड 0 एंड इंट सी इज इक्वल टू नोड 1. ठीक है. ये आ गया. देन अपने को दूसरा लूप चाहिए यहाँ पे. ठीक है. जो मैंने बोला था ये डायरेक्शन सारे पे हम जो करने वाले हैं. तो ये इट विल इटरेट ऑन द डायरेक्शन सारे मतलब टॉप लेफ्ट बॉटम ऑल चारों डायरेक्शन में जाके वो चेक करना है अपने को. तो इन दिस वन द इंट न्यू आई विल नॉट राइट द न्यू रो. ठीक है. अभी बहुत हो गया पूरा लिखना. बहुत वो इफ कंडीशन तो बहुत बड़ा हो जाता है. न्यू रो इज इक्वल टू आर प्लस dir 0 and new column will be dir 1 c c plus and this is nc. ठीक है. After this we have to check the standard condition. This is very standard condition for the BFS, so it should be greater than equal to 0. Don't forget this. And new column should be greater than equal to 0 and it can't exceed the number of rows present. It can't go outside the grid given, and also similarly the column also can't go outside of its grid. ठीक है. And the specific condition, it shouldn't be visited, that's for sure. So new row, new column shouldn't be visited cell. And the one condition where I'm slightly confused, but I'm trying anyways. New row, new column of the rooms should be equal to infinite. Should be equal to what I wrote. uh, should be equal to infinite. ठीक है. तो ये infinite को हम इधर भी ले लेते हैं या इसको बाहर डाल देते हैं. ठीक है. INF. And then if all this condition follows then we'll go inside. ठीक है. We'll go inside and then inside this uh, we have to like do this rooms current new row new column and increase the distance by 1 because we are iterating by 1. So rooms
और C value +1. Then Q dot add this new int. Just a second, guys. I'll read the messages again. I missed some messages, I know. बट इसको एक बार रन करने दो, क्योंकि रन करने के बाद और 15-20 मिनट जाते हैं उसको डिबग करने में. एंड देन वी हैव टू मार्क इट एज विजिटेड. सो न्यू रो न्यू कॉलम इज इक्वल टू ट्रू. ठीक है, दिस वाज इट. इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या क्या सिंटेक्स एरर्स है. इंटीजर मैक्स, हाँ ये मेरे को लगा ही था. कैन नॉट फाइंड सिंबल इंटीजर डॉट मैक्स और मैक्सिमम. इंटीजर, ये मेरे को सिंटेक्स गूगल करने दो, इसका मेरे को था ही कंफ्यूजन. इंटीजर मैक्स वैल्यू, इंटीजर मैक्स वैल्यू. BFS क्यू कौन चाचा. ठीक है, रन हो गया और एक केस पास हो गया. ठीक है, जो कि एकदम इनवैल्यूएबल ये है. एक्सपेक्टेड दिस आउटपुट अपना चेंज नहीं हुआ. अरे इसने क्या किया ये. नहीं, ये गड़बड़ हो गया अपना थोड़ा सा. CN के लिए क्या ही बताऊं भाई मैं. कंप्यूटर नेटवर्क अगर ये पूछ रहे तो आई डोंट हैव एनी. व्हाट एल्स यू गाइस सेड. टू सम हैश मैप क्वेश्चन है, अरे में दिखा दिया फर्स्ट इजी पे तो लिया था. टीटी, हाँ हाँ कोई नहीं, तुम मुझसे भी सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन समझ तो गए. यस, समझना ही ज़रूरी है. सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, बट वही स्लोइंग डाउन जस्ट डिमोटिवेट्स यू यार. नो नो नो, स्लोइंग डाउन डजंट डिमोटिवेट ब्रो. कोई रेस नहीं है, कुछ नहीं है. अपने स्पीड से अपने हिसाब से करो, मस्त एकदम मस्त मज़े लेके करो उसको, मज़ा आएगा. कोई ज़रूरत नहीं. कभी कभी पता है, कोई कोई दिन सम डेज विल बी बैड, जिस दिन एक भी क्वेश्चन नहीं होगा. सम डेज विल बी लाइक टू गुड, यू विल लाइक डू एंड अप डूइंग almost 9-10 questions in a day, and you will be like, oh wow. The consistency doesn't pay in a day or daily basis. Consistency pays in like in installments. Good to know, bro. अथर्व, मैट्रिक्स में हमने क्या किया था. ठीक है, ये हमने सेम. तो मे बी वी डोंट हैव टू चेक फॉर द इनफाइनाइट ओवर हियर. वी हैव टू चेक फॉर द वन. नॉट इनफाइनाइट मे बी. नो, वी आर वेरी रॉन्ग ओवर हियर. ऐड दैट टू द वर्ड्स ऑफ क्या बोला था मैंने, मैं खुद ही भूल गया. मैं ट्विटर पे कभी ऐसा आता है ना, मैं शेयर करते रहता हूँ. आज मैंने ट्विटर का पोस्ट यहाँ पे शेयर किया यूट्यूब पे. इफ़ यू गाइज हैव सीन दैट. कहाँ था वो. पोस्ट, ये कभी कभी मेरा होता है.
Enlightenment ascended. Uh, Let me now dry run this because I am going inside at the wrong position, so it shouldn't be the case. This I have added the infinite. What's the infinite value? Let me check. Uh, 2147. Last में 47 है. Is it the one? Yeah, this is the value. That means it's correct. We use the value to represent INF, as you may assume that the distance is less than this. So it should not. We are adding plus 1 to this. No, it should not add plus 1. If nr equal to this gate is minus 1, no, sorry, 0, it should be 0. Okay, इसको तो पहले अंदर ले आओ, इसको यहाँ ज़रूरत नहीं है. You need over here. ठीक है. And then if this not visited, we are marking this as visited. बट आउटपुट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये क्यों ऐसे? एक भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है ना, सब कुछ एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. इस दिस हम इसको ऐड कर रहे हैं, जो सोर्स है उसको ऐड करना था, हमने इनफाइनाइट का किया है, शायद मैंने बोला भी और वहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट. तो ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए. दिस वी नीड ओवर हियर एंड चेक दिस INF ओवर हियर. अब मैं कंफ्यूज हो गया, अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ. ओके, वैल्यूज तो चेंज हो गई अभी. नाउ माय थिंकिंग is slightly aligned, no, because we are going inside once, so we should do this plus wala because this thing once. Output is expected 3. 19 online is like 19 people are 20 people are studying this problem. Let me go to the discussions. The problem lacks this. Yes, the description is yes. For example, is the diagonal distance is the same as vertical horizontal. It's turned out that you can move in 4 directions. Yeah, we can move. This is nearly the same problem. Yeah, almost rotting oranges. Okay, so rotting oranges में हमने क्या किया था? Rotting oranges में हमने रोटिंग ऑरेंजेस में बहुत कुछ है भाई, ये रोटिंग ऑरेंजेस की तरह नहीं है. किसको 19 वोट्स मिले? फॉर एनीवन वंडरिंग यू कैन मूव. या we should have like this. I think uh, this should initialize to 0 if we are going in, you know. No, ये कुछ भी था. ये वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए भाई एक भी जगह. ये क्यों आ रही है वैल्यू?
मेरे को लगता है विजिटेड की ज़रूरत, यहाँ पे विजिटेड चेक करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि वो फिर से उधर जा सकता है ना। यार ये ट्राई रन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाट यू गाइस आर सेइंग, एनी हेल्प? हो गया वो टू सम, बढ़िया भाई। आई डोंट नो अबाउट हैशिंग, यू विल नो। हैशिंग ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। शैंक्स ब्रो, हेलो हेलो शैंक्स, एकदम सही सही टाइम पे आए हो। आज करेक्ट करो भाई। कल भी तुमने हेल्प किया था मैट्रिक्स में, देन इट गॉट सॉल्व्ड, नाउ यू कैन हेल्प मी ब्रो। श्री साई, इज इट सिमिलर टू O1 मैट्रिक्स? यस। आपका स्ट्रीम पे वॉइस लो है, आई जस्ट रियलाइज्ड वाचिंग अदर वीडियोस ऑन YT। ओके, इज इट? नहीं, मैं पहले ये माइक यूज़ करता था, ये माइक डायनामिक माइक है। आई वॉज यूजिंग दिस माइक बिकॉज आई लिव राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट और इट कैंसल्स दैट नॉइस, बट नाउ इस टाइम पे तो आई एम यूजिंग दिस। ठीक है, अभी अभी कैसा वॉइस है अथर्व? इज इट नाइस? इज इट ओके नाउ? Shri Sai, you posted something that is unreadable in the chat. उसकी तरह ही है भाई, लेकिन आई एम नॉट श्योर। व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, अब मस्त है। ठीक है, नाइस नाइस नाइस। शांक्स भाई बताओ। मेरे को सेम फंक्शन कॉल करना पड़ेगा क्या यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज हाउ इट विल। हमने ये BFS लूप के अंदर नहीं कॉल किया ना कल, तो ये गलत है शायद मेरे ख्याल से। BFS should be outside if it's following the same pattern। ठीक है, आई और जे हमने यूज़ ही नहीं किया है ना कहीं पे, तो आई और जे की ज़रूरत ही नहीं है। इज इट बेटर? ट्राई एंड सबमिट इट। 5 टेस्ट केसेस आउट ऑफ 62। ठीक है, वी आर क्लोज। ये फिर भी ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए एक बार भी ना अभी। नाउ द वैल्यूज हैव रिड्यूस्ड, बट स्टिल व्हाट यू आर सेइंग ब्रो। आपका स्ट्रीम पे ये मैंने पढ़ा। हाँ, अब मस्त है। इफ़ इट्स सिमिलर, इफ़ इट्स सिमिलर, ओ ओ आई, मैं नहीं समझा। आई जस्ट रियलाइज्ड यू आर वियरिंग बोथ ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स फॉर ऑडियो एंड माइक मस्ट जुगाड़। ये मेरा गाने सुनने के लिए इधर कनेक्टेड है। ये मैकबुक इतना चूतिया डिवाइस है ना भाई, अगर मैं कुछ भी गाने सुनूं, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं वो ऑफ कर पाऊँ स्ट्रीम पे। देर इज़ नो सच ऑप्शन ऑन मैकबुक कि मैं मल्टीपल चीज़ें मैनेज करूँ, ऑडियो और ये सब। इसलिए मेरे को, या इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। आई जस्ट पिक द सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन, उस पर 4-5 क्वेश्चन करता हूँ, देन आई मूव अहेड, राइट डाउन इन माई नोट्स कि दिस इज द फकिंग पैटर्न, and how to start and how to end this problem. Start from every gate, do BFS, and if you find any room, mark it with the distance. Yeah, that's what। but यहाँ पे एक मिस हो रहा है अभी मेरे को, है ना। अच्छे से अगर करना होगा इसको तो मैं
ड्राई रन करना पड़ेगा, जो अभी मेरे में एनर्जी नहीं बची है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं तो मैं कर देता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। एक मिनट में बड़ा कर देता हूँ कि सो दैट यू गाइज ऑल्सो कैन सी इट where I'm doing this. This is the same thing in CNR, less than rows and C columns, visited NR and C. Oh shit, oh shit. हैंचोद। अरे यार, अबे यार, तो ये सही था क्या फिर? नहीं, ये बाहर ही चाहिए। पहले सब मार्क कर लो, उसके बाद बीएफएस करो। उसके बीच में बीएफएस नहीं करना, इट्स नॉट डीएफएस। ओके, it's exactly similar to matrix, bro, exactly similar to matrix. Unlock the full LeetCode experience, company profile, ask LeetCode। अब मेरे पास प्रीमियम फीचर है ना, तो मैं तुम लोगों को वो सब चीज़ें दिखा सकता हूँ जो यूजुअली नहीं हम देख पाते। ये भाई मैंने लिया है, कंपनी प्रॉब्लम्स आस्क LeetCode, मेरे पास है भाई प्रीमियम। बडी, शो मी। हाँ, लेट्स सी एनालिसिस, ये क्या बताता है। लेट्स सी द प्रीमियम फीचर। Start from aggregate, do BFS, and if you find any room, mark it with a distance. MacBook prefer करोगे कोडिंग के लिए? I hate MacBook actually for lack of freedom on my own device, yeah. मैं I'm sorry. मैंने मैकबुक एडिटिंग वगैरह के लिए लिया था। आई यूज टू, मेरा दूसरा भी यूट्यूब चैनल है ना, जहाँ पे आई हैव लाइक अच्छे खासे सब्सक्राइबर, सो टू डू वीडियोस ऑन दैट, एडिट और आफ्टर इफेक्ट्स चलाने के लिए मैकबुक इज़ वेरी गुड। मैकबुक पे कैसे ना, हम बहुत मुश्किल काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आसान काम होते हैं हो ही नहीं पाते मैकबुक पे। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल मशीन टू बी ऑनेस्ट। मैकबुक इज मेड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क्स। Suggested BFS array queue. Key idea using multi-source BFS to find a multi-source. It's a multi-source BFS to find the shortest path from the multiple gates simultaneously. Since the INF value indicates, because we just know this pattern, we like skipped on many of the conditions like how it's calculating short, because we didn't do the try run. हमने बस ऊपर ऊपर से देखा कि क्यू में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है, बट Q, I guess this is the drawback of knowing the pattern. Suggested code complexity, suggested implementation already reaches the optimal complexity, no doubt about it. You are truly outstanding. Hey, thank you. Readability excellent, structure excellent. Suggestion your code is exceptionally clean and follows all standard naming and structural convention. Good, good. Memory. Yum. Which is optimal. Why it is saying that? Guys, please like कर दो यार stream को. I am not seeing many likes. To views ratio is less today. Please do like the stream, guys. uh, MacBook prefer करोगे कोडिंग के लिए? I hate MacBook actually for lack of freedom. Yes. दूसरा कौन सा है सेम कोडिंग? मैट्रिक्स वाला, ये कल का प्रॉब्लम। दिस, इसमें भी सेम ही ऑलमोस्ट चीज़ करनी थी जो इसमें किया। Mac is super efficient in power management and UX. UX इसका अच्छा है, and if you are not into gaming or ML training, prefer MacBook any day. See, अगर तुम्हें है ना हाई इफिशिएंट, मतलब जिसमें सीपीयू इंटेंसिव टास्क करने हैं, तो इनके ये जो सिलिकॉन चिप्स बनाए हुए हैं ना, एक ही चिप में उन्होंने सब पेल दिया है, इट्स लाइक वेरी गुड
रेंडरिंग वगैरह इतना फास्ट, लेकिन तुम्हें बेसिक कामों के लिए इतना टट्टी है ये मैकबुक। मतलब विंडो मैनेजमेंट हो गया, ये हो गया, सारी चीज़ों के लिए देखो आई हैव सो मेनी प्लगइन्स इंस्टॉल, सीरीज ट्रांसफरिंग फाइल्स टू द अदर एसएसडी एंड एचडीडी जिससे हमने कनेक्ट कर रखा है। मेरे को उसके लिए ये करना पड़ा, ठीक है। फिर ये कॉपी पेस्टिंग वाला, ये मेरे को चाहिए कि क्लिपबोर्ड पेस्ट ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। माउस इन्वर्ट करने के लिए साला माउस से उल्टा स्क्रॉल होता है, इससे उल्टा स्क्रॉल होता है। अजीब ही बकचोदी इस पे भाई। यूआई यूएक्स ये एकदम छोटे छोटे, अगर मैं इसको और बड़े, मेरे पास एक बड़ा मॉनिटर है उस पर मैं ले जाऊँ ना, ये जो आइकन्स है ना और छोटे दिखते हैं उस पर, ऐसे जाके देख के वो क्लोज करना पड़ता है, वो रेशो वाइज बड़ा भी नहीं होता। इस प्रीमियम फॉर एवर नो, एक साल के लिए, एक साल के लिए लिया है मैंने यार। आ, एक साल के लिए 3 लाइक्स, लोग तो बहुत है लाइक कर तो। यस वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, 3 लाइक्स नहीं है, 7 लाइक्स आई कैन सी। वो तुम्हारा रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, वो जस्ट इन टाइम रिफ्रेश नहीं होता लाइक्स, वंस यू रिफ्रेश द पेज देन इट रिफ्रेशेस द लाइक्स। MacBook is just annoying, yeah, totally यार। I have to like keep shutting on that, I have to keep like stop the thread of that thinking कि why I'm doing that on MacBook or all. I just ignores that। मैं सोच रहा था कि स्ट्रीमिंग के लिए कोई मैं विंडोज़ ले लूँ, या सर्फेस प्रो इज़ वेरी गुड बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट एज वेल, एंड सर्फेस प्रो इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। विंडोज सरफेस प्रो, जो लोग चूते हैं ना वो ये खरीदते हैं भाई, आईपैड खरीदते हैं। आईपैड में क्या है, आईओएस है भाई, जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है वही बड़े स्क्रीन पे मिलता है, वो भी विदाउट सिम। तुम क्या एनिमेशंस करना है किसी को, उसके लिए बहुत अच्छा है आईपैड, लेकिन बाकी लोगों के लिए मेरे को नहीं लगता। नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट्स इट। लेकिन सरफेस प्रो इज़ लाइक ब्रो, इट्स ऑल इन वन, पूरा तुम गेम तक खेल सकते हो इस छोटे से डिवाइस में, टैब टैब की तरह यूज़ कर सकते हो, इज अ टैब विथ फुल पीसी। So I was thinking कि have this Surface Pro for the streaming and all, because ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है विंडोज़ पे, या एटलीस्ट इस पे ऑप्शन होता है लिनक्स इंस्टॉल करने का, तो आई वुड हैव डन दैट एज वेल। लेट मी आस्क कि सिमिलर प्रॉब्लम कौन सा है। uh, अगर कोई सिमिलर, ये मेरे को एक बार ट्राई रन करना पड़ेगा, जो हमने बीच में ट्राई रन वाले स्ट्रीम्स किए थे ना, उससे डीएफएस अपने को अच्छे से समझ में आ गया। बीएफएस भी हम ये एक 9-10 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट तीन या चार पैटर्न नहीं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी है। और क्या था इसमें, आई हैव नोटेड डाउन दोज। मल्टी सोर्स वाला ये है, साइकिल डिटेक्शन भी एक है, टोपोलॉजिकल सोर्स है, बाईपार्टेड ग्राफ, अरे इसमें बहुत ज़्यादा है यार। यूनियन फाइंड भी है, शॉर्टेस्ट पाथ हमने कर लिया, मिनिमम स्पेसिंग भी, मिनिमम मिनिमम स्पैनिंग वाला है, एडवांस डीएफ, इसमें बहुत सारे हैं, तो अपने को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसमें। तो उसके बाद हम ट्राई रन्स करेंगे। गुड थिंग भैया मैक का माउस नहीं लिया, इतना ब्रेनलेस लोगों ने बनाया है ना कॉलेज में। तो इतना दिमाग खराब होता है, अरे सीरियसली पता है। और पता है मैं जब मैकबुक खरीदने जा रहा था ना, तो मैंने जिन लोगों के पास मैकबुक था उनको एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि यार इसमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो? क्योंकि अपनी दुनिया, इंडियन लोगों की दुनिया पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे चलती है। प्रीमियर प्रो हो गया, ये हो गया, उनके सॉफ्टवेयर साला 600 $600, $1000 तक के लाइसेंसेस है। और वो मैंने पूछा कि भाई ये कर सकते हो? बोले हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। मैं बोला तुम लोग करते क्या हो फिर मैकबुक पे, बस वीडियो देखते हो? मतलब सालों से तुम्हारे पास मैकबुक है, कभी भी तुमने पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया। लोग करते नहीं। जो मैक यूजर्स है ना वो पता नहीं एकदम स्पेसिफिक ये है वो, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, जो जुगाड़ू चीज़ें हैं ना जो हम करते हैं, कि कोई विंडो इंस्टॉल कर लिया, कोई सॉफ्टवेयर चला के देख लिया। मेरे इसमें कितने सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर से। आई होप मेरा ये बैन ना करे। देखो ये मेरे को ये ऐप्स भी नहीं दिखाने दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाँ सी, ये जुगाड़ करना पड़ता है इसमें। क्या नहीं, इसने इंडेक्स कर लिया, ये सी मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब प्रीमियर प्रो, ये सब पायरेटेड है, ठीक है। और क्या है,
पायरेटेड ये यूटोरेंट भी भाई। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह है, ये भी पायरेटेड डाउनलोड करना पड़ा क्योंकि ये डीएमजी के लिए पेड वर्जन है इसके। वन ड्राइव वगैरह ये सब पायरेटेड एप्लीकेशन है। यूट्यूब प्लीज डोंट ब्लॉक मी, दिस मिस्टर हॉर्स एडोब इलस्ट्रेटर। हाँ, आ, इसके ये एक्सटेंशंस वगैरह, ये एन एफ टी एस एन टी एफ एस फॉर मैक। ठीक है, ये मैक ही तो मैंने इंस्टॉल किया है गिटहब से, ये भी नहीं करने देता, उसके लिए भी सिक्योरिटी है, उसको अलाउ करो। आ, और क्या है अपना पायरेटेड, या ये तो है जो इंडेक्स्ड में दिख रहे हैं, नॉन इंडेक्स्ड में तो कितने होंगे भाई। अरे हेलो हेलो अथर्व, अरे बहुत लेट हो गया। क्या क्या किया तुमने आज बताओ। नाउ somehow आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर डे ब्रो। पायरेसी नहीं करोगे टेक में तो होके तो क्या, वही तो यार। क्या फ़ायदा बताओ तुमने, अगर कभी पायरेटेड सॉफ्टवेयर मैकबुक पे इंस्टॉल नहीं किया तो क्या किया मैकबुक लेके फिर। लिटरली मेरे को बोला यार, मेरे को तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी पायरेटेड सॉफ्टवेयर में, बोला पायरेटेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने दोस्त के मशीन पे वीएम इंस्टॉल करके पायरेटेड करवा के दिया था। अरे नहीं, उसके लिए है ना, सी मेरे को जब मैंने पायरेटेड मैकबुक का देखा ना, पायरेटेड अलोइंग नॉट अलोइंग इज नॉट अप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब मैकबुक का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स अ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। और इंडिया में वो अलाउड है। अगर तुम यूरोप में जाओगे और पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें $1000 1000 का कुछ फाइन है। आह, तो इंडिया में चलता है, बस तुम्हें वो फाइल ढूंढना मुश्किल है क्योंकि एप्पल की टीम से जो ना ये पायरेटेड फाइल्स वगैरह निकालते रहते हैं, और ऊपर से सिलिकन चिप के लिए डॉट डीएमजी फाइल लगता है, उसके तो और कम मिलते हैं। लेकिन अभी तो बहुत साल हो गए, मेरा M1 प्रो है तो मैंने बहुत सालों पहले लिया था, तो तब तो डीएमजी सिलिकन चिप के लिए पायरेटेड फाइल्स नहीं आती थी, लेकिन अभी आती है शायद। स्ट्रीम ही कर रहा था अभी तक। ओके, नाइस नाइस नाइस, 3 आवर्स पे 3 पार्ट्स में करना पड़ा। यफ, लाइट, ओ ओके। अभी लाइट के इशू चल रहे हैं आज पुणे में, आज बारिश हुई, कल से बारिश चालू हुई है आई गेस। पायरेसी करके सीखने मिलता है, हाँ यस। तुरंत भाग के आया टाइम मिलते ही, अरे बढ़िया, थैंक यू ब्रो यार। वेलकम टू द स्ट्रीम अथर्वा। शाम का कुछ वगैरह नहीं फिनिश कर पाया, ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी होता है, नॉट ऑल डेज आर सेम। साइड वाले मैटर्स आल्सो सॉल्व, ओके। I'll not read your personal messages out loud, even though it's a public message, but still, that's good to hear. पकड़े जाओगे तो ये मुझे पहले पकड़ लेंगे। अरे अपने बहुत लोगों को पता नहीं होता उधर जाके ना, ये फाइन लगे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्त थे, एक को लगा था, पहले खाने पीने के वांदे और ऊपर से जाके ऐसा फाइन लग गया तो फिर, क्योंकि द लॉज इन डेवलप्ड कंट्रीज आर वेरी स्ट्रिक्ट। फार फ्रॉम होम is the question, far from land as possible, this is the suggested question. uh, it will show 73। मेरे को ये एक एक नंबर बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है क्योंकि मैं बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फार फ्रॉम लैंड पॉसिबल, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अरे इसमें हम कंपनीज भी देख सकते हैं ना, हम कंपनीज देखते हैं प्रीमियम में यार, कौन कौन से कंपनीज में पूछा गया था। 0 to 6 months डोर डैश, मेटा, अमेजोन। डोर डैश तो इंडिया में लेता नहीं मेरे ख्याल से। 6 months एगो, 6 महीने पहले गूगल, टिकटॉक, उबर, वीज़ा, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूमबर्ग, स्नोफ्लेक, ई पे। तुम लोगों को पता है ब्लूमबर्ग का एंड चैटजीपीटी इज डूइंग वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन टेक्सास यूएसए, अंडरग्राउंड और ओवर द ग्राउंड वाला servers and all. Once they do that, then पूरा AI revolution will be from, even it's already from USA, but उसके बाद तो वो भाई there will be no stopping। उसके बाद अपने jobs वगैरह जाना, और जो इंडिया में jobs आ रहे यूएस से, आह, वो जाना तो चालू होगा, मेरे को पता है, क्योंकि when the banks are invested then the things go very dark।
things take very dark turn. Should I show you that? Bloomberg. ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है एक्चुअली, ब्लूमबर्ग न्यूज़ में कोई तो बैंक ही, डच बैंक या कोई तो बैंक इन्वॉल्व है उसमें। दिखाऊं क्या वो वीडियो में? अरे मैंने आज डिस्कॉर्ड पे पोस्ट ही नहीं किया ना, क्योंकि आते ही तो ये चालू हो गया। चैट जीपीटी ब्लूमबर्ग टेक्सास सर्वर ब्लूमबर्ग दिस। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। Emily Chang visits the Stargate site in Abilene, Texas for an exclusive first look at historic $500 billion bet on the future of AI announced by the President Trump. She speaks with the OpenAI CEO Sam and SoftBank, yeah, son, about why they have partnered along with the Oracle to build one of the largest AI data centers in the world. It's like this guy is like villain of the new age. Mm, ओके, शुड आई सॉल्व? यार मेरे को भूख लगा है, एक ही क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा टाइम खा लिया, तो कैन आई टेक अ ब्रेक नाउ? कैन आई स्टॉप फॉर टुडे गाइस? सॉरी लंच नहीं कर पाया फिनिश। ठीक है, 12 बजने वाला है अब खाना। हाँ यार, अब मैं वो मेरे को नींद आ रहा था क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो इसलिए आई स्किप द लंच, स्किप द डिनर। आज कुछ बच्चे आए थे, करियर एडवाइस मेरा अप्रोच पूछे, लंबी बातें हुई, सब मज़ा आया। दो लोग अलग अलग बातें, बढ़िया बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, गुड गुड गुड। Guys, please do like the stream. Yeah, I was thinking to end it. Let me read this question if it's possible quickly. Then we'll do it. At least we'll give it a try. Uh, Given n cross n grid containing only values 0 and 1, where 0 represents water and 1 represents land. Okay, find, let me use pen and paper. Find a water cell such that its distance to the nearest land cell is maximized, and return the distance if no land or water exists in the grid, return -1. uh, जा रहे हो क्या? तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है? एक तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। और क्या लिखा है ऊपर का? कुछ मैसेज मिस कर दिया शायद मैंने। आज कुछ, हाँ ये मैंने पढ़ा। टुडे रिविजिटेड टू प्रॉब्लम्स, डिड वन न्यू प्रॉब्लम विद टू अप्रोचेस एंड आफ्टर दैट अगेन वन प्रॉब्लम। दैट्स नाइस, गुड। यू आर गोइंग टू फास्ट, विच इज नाइस। हाउ वाज योर डे? मेरा डे तो यार, आई स्टार्ट विद आई डेली स्टार्ट विद द जिम, देन काम, कॉल्स थे आज। मेरे कंपनी ने बुलाया था ऑफिस में, बोला माँ चुदा है, मैं नहीं जा रहा भाई ऑफिस, मैं नहीं गया ऑफिस। तो मेरे को कुछ बोलेंगे अभी पता नहीं, बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड और कौन जाएगा। उसके बाद मेरे पास कुछ बग्स थे, आई ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, सो आई हैड सम फ्री टाइम, सो आई रीड सम बुक, और आई रोट सम नोट्स वगैरह लिख दिया मैंने, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट checking about the next project. I'll do 3-4 array questions today, or should I push myself more? करो करो, यू कैन पुश करो भाई, थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो। नहीं कर लूँगा खुद, कल पूछ लूँगा एनी डाउट्स। सी प्लस प्लस चलेगा? यार मेरे को सी प्लस प्लस किए हुए ज़माना हो गया अभी। और मेरे से क्यों डाउट पूछना है? अभी तुम्हारे पास चैट जीपीटी है भाई, वो तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्या करना है, वो पूछ सकते हो जैसा मैंने बताया। यस सर, अथर्व सुप्रीमेसी।
Yes, Atharva. What's your surname? Atharva Gadwe. Okay. You look like from Maharashtra, bro. Marathi है इसका. Given n cross n grid containing only values. Okay. Represents water, and this one represents land. Find the water. Find a sail such that 100%. Yeah. That's what, bro. Use ChatGPT to make you understand the things. The distance used in this problem is the Manhattan distance, the distance between two cells. Mod of this and this. Okay, the distance can't be negative. Dada Mumbai. Arey, nice, nice. Arey, I have graduated from Mumbai, bro. I have like very emotional connection with Mumbai. I spent 4 best years of my life in Mumbai. My college was in Dadar. 10. So क्या करना है अपने को? Containing zero. Find a water cell. This water cell. Uh, Find a water cell such that is the distance to the nearest land cell is maximized. I am started CSEs. नहीं समझा मैं यार. CSEES क्वेश्चन है क्या कोई? चार्ट जीपीटी कैसे फीलिंग से नहीं सीखा. दादर विजेटिया. यस यस विजेटिया. आई एम फ्रॉम विजेटिया, ब्रो. बहुत जल्दी गेस कर लिया विजेटिया. देर इज वन मोर कॉलेज ना, आईसीटी, जो एकदम मेरे सामने है. बट इट्स अ केमिकल कॉलेज, सो अंबानी का कॉलेज. दादर विजेटिया. यस. तुम लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो क्या लिंक्डइन पे? बिकॉज मेरे को नोटिफिकेशन आ रहा है फॉलोड फॉलोड. चेस बोलना है क्या? सीपी. अच्छा. ओके ओके. श्री साई अपना एक कॉम्प्लिकेटेड बंदा है भाई. ही इज लाइक another type of Pokemon. He's from the legendary category. Base set evolution 2. तुम लोगों को कुछ रेफरेंस है क्या? डू यू गाइज लाइक फॉलो दिस पोकेमॉन कार्ड्स एंड ऑल? तुम लोगों को ये सब चीज़ें में इंटरेस्ट है क्या? लाइक दिस इज अ पोकेमॉन कार्ड, जापानीज पोकेमॉन कार्ड फ्रॉम कॉमन सेट, नॉट अ बेस सेट. इफ यू गाइज कैन सी दिस. सीपी व्हाट इज इट? यस. पोकेमॉन लॉल भाई, इनका बहुत वैल्यू है भाई इन पोकेमॉन कार्ड्स का. ये यू गाइस डोंट नो, करोड़ों में भी बिकते हैं ये. सीपी क्या है? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सीपी क्या है भाई. अरे बहुत इंटरेस्ट है पैसे. अरे आई हैव फाउंड अ यूट्यूबर. आई मेट वन यूट्यूबर जो इसको रिव्यू करता है ये सब, और वो खरीदता है बॉक्सेस एंड देन ही सेल्स द पैकेट्स इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में ये मिलना बहुत मुश्किल है. तो आई मेट हिम इन वन ऑफ द नेटवर्क वाले इवेंट ना, एंड उससे मैंने लिए पोकेमॉन के कुछ बेसिक परचेस्ड इट. एंड आई सेड कि जब भी आता है तो प्लीज़ आई विल गिव एन ऑर्डर टू यू. 8 लोग. या गाइस प्लीज डू लाइक. नहीं, आज का व्यूइंग अच्छा है. मंडे इज लाइक डल ब्रो. अथर्व, ट्यूसडेज आर फाइन, मंडेज आर डल, एंड फ्राइडेज आर डल.
जॉब के बाद। यस, आज बहुत लोग हैं। यस, केसेस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, या लगेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, तो अपने को डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वाटर से लैंड तक का। तो मैक्सिमम इसका कितना है डिस्टेंस, इसका 1 है। ठीक है, इसका कितना है, 1 है। ठीक है, इस जीरो का कितना है, 1 और 2 है। 1 और 2, इधर साइड 1 और 2। इसका 1 है, इसका 1 है, सो इसका 2, सो आउटपुट विल बी 2। ठीक है, देन इस केस में इसका होगा 1 2 3 4। 4 इज द आउटपुट। तुमने मिस्टेक किया है, हम 3 लोग दिमाग लगा रहे भाई, ये क्या बोलना चाह रहा है। You did a mistake and 3 of us started to think about it, bro. कि because I'm thinking, because I see you like you are in a legendary category, you can't do a mistake, so I was thinking कि ये बोला what is trying to say. श्री साई, कितना तुम्हारा प्रोफाइल देखेगा एक बार भाई। um, मैं एक्चुअल काम छोड़ के बाकी सब चीज़ों में मेरे को इंटरेस्ट ऐसे लग रहा है। 302, 14 हार्ड। डिजाइन लिंक लिस्ट, यू आर ऑन लिंक लिस्ट, यूनिक पाथ, वैलिड सब अरेज। अभी मेरे को लग रहा है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ये सब करने में श्री साई, यू आर जस्ट हैविंग फन, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग, यू नाउ यू आर फ्लेक्सिंग। 13 submissions, 14 submissions, and let me check the other guy, uh, the legendary 900, and this motherfucker is like ultra legendary. तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अपने को। So what would be the source? In this case, the source is 0. Okay, so we have to add all the zeros in a queue. So we have to add all these in a queue. That's so we will start adding all the zero के जितने भी position है, zeros will be added. Okay, we'll add all the zeros, and then once we pop this out, okay, इसका row and column we will get. The guy who came today had solved 600 plus problem but could not react after seeing them. बस हार्डकोर यस, इन द लास्ट 1 year, यस ये मैंने इंग्लिश में पढ़ा, बट आज जो आ, आज जो बंदा आया था, ही सॉल्व 600 प्लस प्रॉब्लम, देख के रिएक्शन नहीं दे पा। नो फ्लेक्स ब्रो, जस्ट सेइंग दैट यू कैन ट्राई टू, या ब्रो, looking at your profile I have kept it like okay, I have to reach this level. I'll reach slowly but steadily, I'll reach, there's no issue. Oh, we added all these zeros, position zero के position in this one, and then we'll pop this out, we get the row and column. Okay, so for example this is the last element which has been popped. Okay, so this will come out first, and इसका position, so 3 and 0, sorry 2 and 2, and then we will check its uh, top. Okay, so what we have to check, if it's 1, if it's 0, then we'll do +1, if it's 0 we'll do +1, and here somewhere we have to keep the math max. So what we have to keep the math max, so once we get out of that loop, okay, uh, not out of that loop, so we have to like do math max
maybe result we have to keep, and then current, and then this. Okay, I understood. I'll directly start writing this code. I guess it's on the similar lines. Okay, so because it's a similar pattern, so let's give it a try. Same int rows is equal to grid.len gth. What you are saying? You will but try case CS is it's good actually. CSES competitive programming you mean? लाइट में आज औकात दिखा दिया, हाँ हाँ वो तो भाई अपना इंडिया का गिवन प्रॉब्लम है. Guys, do you guys wanna follow me on Instagram, because I want some way to talk to you, connect with you on regular basis, because this Discord I doesn't feel it's very correct. कोई भी ऑनलाइन ही नहीं रहता यहाँ पे. ये एक बंदा ऑनलाइन होता है, वे भी इज लाइक ऑलवेज प्लेइंग पबजी. सो do follow me on Instagram, so that I really want to know my audience. You will but try CSCS. It's I have played the farmer was replaced game Python में है, where you have to move a drone around in a matrix for framing and all. Okay, फन हो जाता है पाइथन सीखने के लिए. ओ नाइस नाइस, ऐसी चीज़ें पसंद है. ये सी एस सी एस मैं नहीं समझा, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ही बोल रहे हो, मैं यही समझ रहा हूँ. श्री साई, आई एम नॉट अंडरस्टूड सी एस सी एस. आई एम कंसिडरिंग इज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग. ओके सो बहुत भूख लगा है भाई. न्यू एरे डेक. ओके and then guys, please do like जिसने भी like नहीं किया, and then we also need the visited array for sure, so we'll mark, we'll create the visited array. So visited graphs में सारे almost question में चाहिए, not all. I should not generalize that. uh, rows and columns, ठीक है. ये visited array नीचे it's not looking good when it's down to queue, so it should be over here, ठीक है. And then we will, so it's the same code, no, why I'm writing again, I can have this, ठीक है. Because यही चीज़ चाहिए अपने को, बस the condition will be different. Okay, sorry for that. And then if equal to 0, yeah, 0 is the source, so condition भी कुछ change नहीं है. And after this for loop we will like do BFS. BFS will pass the grid over here, then visited, then we will pass queue. Okay, then rows and then columns, ठीक है. And these many things we need to pass. And let me create public, it's a int, so it will return an int, so we need to have the int. So return int distance, yeah. One search CSES. Okay, CSES problem set. ओके ओके, हाँ ये किसी ने बताया हुआ था शायद ना. Weird algorithm. Missing number. You are given an all you are given all numbers between 1 to n except 1. Your task is to find the missing number. The first input line contains an integer n. The first input line contains the integer n, and the second line contains n minus 1 numbers. N minus 1, but it's starting from the 1, so why n minus 1? If there are like 3, 1 to 3 or 1 to, each number is distinct and between 1 and n inclusive. Second line contains n minus 1. Print the missing number. So can we use like वो अरिथमेटिक वाला फॉर्मूला नहीं होता कि n into n minus 2 divided by 2
is equal to कितना sum आना चाहिए. If there are n numbers, so the sum should be this, but only one number is missing, so we'll subtract that and we'll get that number. Arithmetic equations नहीं, arithmetic sum नहीं होता था क्या? So arithmetic sum gives us this, uh, I guess n into n minus 1 divided by 2, it gives us the sum. So this sum, so from this sum minus, we have to add all these numbers. So iska current sum. So we do current sum or it will give us the missing number. ओके ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स है क्या इसमें? ठीक है, I'll bookmark this CSES. ये जो है इसको मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, बैक टू दिस प्रॉब्लम. int BFS, and in this one like int grid, then boolean visited, then this queue, int rows, int columns. ठीक है, this, and then I'll start to copy from whatever the same from the last problem because अब वो लिखने में कोई point नहीं है. ठीक है, I'll copy these things. पूरा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ ये. ठीक है, जो नहीं चाहिए वो हटा देता हूँ इसमें से. ये नहीं चाहिए अपने को. These conditions like not visited. This is like grid. वही था ना श्री साई? मैंने सही साइड देखा ना? ठीक है. And if it's equal to 0, sorry, equal to 1. I'm checking that. If 0 then plus 1. No, it's equal to 0, and then this, and then we have to keep the number. So int result equal to 0. ठीक है, and we will do like int, oh sorry, result equal to math dot max, and from that uh, either this or result. ठीक है, and after this ends return result. ठीक है, and that is taking up over there. Let's run this. रूम्स नहीं यहाँ पे, ग्रिड वो हमने कॉपी किया उधर से भाई. यस, इट फेल्ड. फेलियर इज आल्सो इज व्हाट वी नीड. सो इंट रिजल्ट 0 यहाँ से लिया, देन इसके अंदर रिजल्ट इक्वल टू मैथ मैक्स 0 ही आया, हर एक के लिए 0, एक्सपेक्टेड 4, ये बदला नहीं. grid RC plus 1, and then grid no 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 no, I'm sorry. So यहाँ पे चाहिए अपने को distance. Distance is initialized to 1. ठीक है, int distance, and this distance will like no, it's like the rotten oranges वाला, and side में हम नहीं कर सकते.
नो बट यार इनसाइड में ही करना पड़ेगा अपने को शायद. लेट मी डू दिस ऑनर्स. सो डिस्टेंस प्लस प्लस करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, एंड विल चेक इफ दिस डिस्टेंस एंड देन दिस इज लाइक दिस. uh, how much is premium? It took me 7,000 rupees, bro. 7k straight. Don't you eat in between between the streams? No, I eat very calculated amount of food. I count my calories. I eat below 1800 calories, and that's why I don't do in between eating. I drink things, but I don't eat. Uh, it's like a rotten. Let me refer to the rotting oranges because now I'm tired. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद ये मैंने. गाइस इसको कल करें कि क्या करें अभी? क्या टाइम हो रहा है? 12:30. नीरज के. हेलो हेलो नीरज. वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. व्हाट इज दिस स्माइली ब्रो? वेलकम टू द स्ट्रीम एंड गाइस प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम यार. आई गेस मैं ना थोड़ा सोर्स वोर्स में गलती कर रहा हूँ, ऐसे मेरे को लग रहा है. यहाँ पे भी मैंने इनफाइनाइट लिया था, बट यहाँ फिर मैंने ज़ीरो लिया. तो मेरे को यहाँ क्या चाहिए कि इज इट वन? लेकिन सोर्स इज लाइक where 0 represents water and 1 represents land. Find a water cell such that it's. तो अगर मैं 1 को ऐड करूँ यहाँ पे, ओके 1 से कुछ तो हुआ, तो यहाँ पे 0. ठीक है, इन दोनों जगह अपोजिट होना चाहिए. मैंने सेम ही किया था. नीरज, I'm close to 10 likes it seems. So anybody who haven't liked the stream, please do like the stream here. I'm coming here on the daily basis, and you are seeing the journey all over here. And this is almost 73rd question that we are solving on the stream. So please consider liking the stream if you are far away or somewhat interested in such things. I also create full stack projects. Currently I am learning Java, and I am building the projects using Spring Boot and sometimes React or sometimes Angular. So and I'm mainly focusing on the system design problems which are famously asked in the interviews. So if you are sparingly interested in such things, then do consider liking the stream so that next time I'll pop up in your feed. Okay guys, I need a like. भाई लिटरली 1 आवर एकदम स्वेट. भाई लिटरली 1 आवर एकदम स्वेट में स्ट्रीम करा, बट डिडंट लिव. गुड ब्रो. गुड 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 गुड. हम शायद ये डिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए प्लस प्लस.
यार ये मेरे को लग रहा है हमने बहुत ही गलत किया है, ये रोटिंग ऑरेंजेस की तरह प्रॉब्लम है। तो अभी आई थिंक आई शुड लीव इट फॉर नाउ, या बेस्ड ऑन द वॉचिंग कि प्लीज़ लेट मी नो शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप। अगर मेरे को कंटिन्यू करना होगा तो मेरे को फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, विच आई एम टायर्ड। हेलो डेवलपर ब्रो, आई एम लेट। हेलो हेलो आर्या सिंह ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। नो वरीज ब्रो। Brother, whom do you recommend to learn or cover? If start cover now, whom do you follow for DSA from start to master and get the flow? ब्रो टू बी ऑनेस्ट मेरे कॉलेज के टीचर ही अच्छे थे, तो मेरे पास उनके लेक्चर्स कोविड के जैसे वो रिकॉर्डेड है, तो मैं आई ऑलवेज फॉलो दोज लेक्चर्स। एंड देर इज़ अ गाय हुज नोट्स रिटर्न नोट्स आई हैव फॉलोड, इज़ लाइक a senior person, senior to me, and उसके notes are very nice. I haven't watched any video. बीच बीच में I watch online videos जहाँ पे I'm like really stuck, जहाँ पे मेरे को flow ही समझ में, wherever I'm not able to understand flow at all, there I have like वो traverse वाले बंदे की video I have referred. Hmm, भाई लिटरली कॉलेज वालों में ड्राइंग वाले सब्जेक्ट में, ओ भाई, भाई वो सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल ही होता है यार, मैंने देखा है कोई कोई लोगों को थोड़ा सा मुश्किल जाता है। अरे मैं आ गया हूँ। या हेलो, तुम्हें तो वेलकम बोला भाई आर्या सिंह। इमेजिन 36 डिग्री सेल्सियस। यस गाइस, प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम यार, आई रियली नीड 15 likes on the daily basis. Today I'm really short on like 5 likes, so do consider liking the stream. आई जस्ट मिस द वाइवा, उसकी वजह से, अरे बेंचो, आई जस्ट मिस द वाइवा एंड उसकी वजह से बैकलॉग में डाल दिया। अब 2000 पे करके बैकलॉग देने जाऊंगा। अबे यार, भाई कुछ जुगाड़ करके कर लेता है यार, ये मुश्किल हो जाता है ना। व्हाट द फक ब्रो, ये नहीं होना था। कुछ नहीं था यार, सब सबमिट था, बस एक छोटी सी, हाँ ना यार, एक छोटी सी गलती की वजह से यार पूरा सब्जेक्ट, मतलब प्रोफेसर्स को भी समझ में आना चाहिए कि यार थोड़ा सा तो कभी मिस्टेक। मेरे को लग रहा है ये ना कुछ नहीं था, बट फाइन, आई एम गोना गिव इम्प्रूवमेंट। हाँ इम्प्रूवमेंट दे दो भाई, और अच्छे मार्क लेके आओ उस सब्जेक्ट में, तो एटलीस्ट जो पैसे जा रहे हो और जो टाइम जा रहा है तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट, उसका फ़ायदा हो। वो इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर चाहो तो उसमें ए ग्रेड, मतलब ऑलमोस्ट 90 मार्क्स भी ला सकते हो। हाँ, कोई ना भाई, कोई ना, कॉलेज एंड तक कुछ ना कुछ कर देना सिस्टम इस कॉलेज का हिसाब किताब। Also will give improvement in physics and an elective sort of subject. Yeah. Ved, Ved Dange. Hello, hi dude. Hi dude. Yes. Hello dude. Welcome to the stream, Ved. And guys, please do like the stream यार, ये मेरे को चिल्ला चिल्ला के आज मेरा गला बैठ गया। मैं I've talked so much today. We have solved two good problems. Oh, one good problem, one resubmitted, but ये problem अच्छा solve किया. But you guys should like the stream, else it's no point in that. Maybe motivator, yeah. Yeah bro. Guys, I need at least one like to reach 10. किसी ने मेरा लाइक वापस ले लिया, कोई तो ये बकचोदी कर रहा है डेली, बट ठीक है, परेशान कर रहा है बीच बीच में, एक लाइक दे के ही इज टेकिंग द लाइक बैक।
सो ये डिस्टेंस को हम अलग अलग जगह ट्राई करते हैं. इट्स लाइक अ रॉटिंग ऑरेंजेस इट सीम्स. सो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ. ठीक है. मैथ मैक्स का हम चक्कर ही हटा देते हैं फिलहाल के लिए. डिस्टेंस प्लस प्लस हम, ठीक है, विल इनिशियलाइज इट टू 0. ठीक है. करंटली इट्स 2, एक्सपेक्टेड 4. ये लाइन तो चाहिए नहीं अपने को, ये चाहिए हो सकता था लेकिन ठीक है. 0 टेस्ट केस. वाह. डिस्टेंस प्लस प्लस कुछ तो ये आया क्या है आउटपुट 2. इसमें क्या आया? 0 0 ही आया. तो यहाँ पे नहीं चाहिए शायद अपने को. यार जब स्ट्रीम ऑलमोस्ट एंड पे होता है ना तो दिमाग कम काम करता है. आई गेस, आई मीन कि थक जाता हूँ तो मैं एक एक चीज़ को ड्राई रन करके मेरे को वो मन ही नहीं करता कि यार मैं करूँ. नहीं तो आई एम डू दिस ऑल ड्राई रनिंग जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया. रोटिंग ऑरेंज में हम क्या कर रहे थे? फ्रेश हमने किया यहाँ. फ्रेश फ्रेश प्लस ये कंडीशन में भी एक्सट्रीम कंडीशन के लिए तब हम सोचेंगे, लेकिन मिनट्स हमने यहाँ पे 0 ये किया. एंड देन दिस. तो यहीं पे अपने को ना वो करना चाहिए प्लस प्लस. तो जो हम कहाँ गया वो प्रॉब्लम. स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम. ये जो डिस्टेंस, ये जो हंस रही है दुनिया मेरे नाकामियों पे ताने. नाउ दे, अब एक न्यू प्रोजेक्ट जो चेक करता है किसी ने लाइक किया. हाँ. थैंक यू गाइज यार. यू गाइज आर गुड नाउ. आई बिलीव इन यू गाइज. डिस्टेंस प्लस प्लस हम कहाँ करें? शुड आई आस्क? ये हमने यूज़ नहीं किया कहीं पे. डिस्टेंस 0 लिया. ठीक है. और हमने हर इस पे कर रहे हैं हम शायद. जब भी हमें वो मिलता है तब भी हमने यहाँ पे हमने करके देखा बट यहाँ पे नहीं चला वो रिजल्ट. अरे हम रिजल्ट ये कर रहे हैं तभी बेंच. और मतलब हम इतने देर से गलत दिमाग लगा रहे थे. ऑलवेज रिमूव द अनयूज्ड वेरिएबल्स फ्रॉम द कोड. ओके. एक्सपेक्टेड टू आउटपुट इज 3. यहाँ पे 4. ओके. इफ आई डू दिस माइनस, आई एम नॉट श्योर व्हाई बट इफ आई डू दिस कि एक ही ज़्यादा है. आई डोंट नो द लॉजिक. ओके. Okay, 37. Oh, only one test case is failing. Maybe it's a age case. So age case is failing. Oh, is it? अरे बेंच, मतलब मेरे को पता नहीं है -1 क्यों. लॉजिकली वाई -1 आई शुड डू. ओके, बाद में देखते हैं. बेंच पहले सॉल्व कर लेते हैं. वन 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 ग्रिड दिस और 0 और -1. Expected is expected is -1. That means there is no land present. If there is no land present, so we have to add that condition. No, how we can know that condition? क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? Oh, we have to check the land. If the land is 0, how we can check the land? If okay, these mean lands. So if I take a land, for example, int land equal to 0, and if I do
uh, land plus plus. Okay, and if at the end if it's still land equal to 0, then return -1. -1 ही return करना है ना. If no land or water exists in the grid. No land or water exists in the grid. So do I have to check for the water as well? और बोला है इसने ना, तो अपने को water भी चेक करना पड़ेगा ना. Else if this is water, this is land, this is water, and do water plus plus water plus plus. ठीक है. And let me create this variable int water equal to 0. ये क्वेश्चन अगर हुआ तो ये मैंने एकदम भूखमरी में क्वेश्चन किया है भाई. If water equal to 0, then this लैंड वाली. अच्छा, लैंड वाली कोई कंडीशन ही नहीं है क्या मतलब? ओए नाइस भाई, ये मेरे को समझा नहीं एक्चुअली कि ये मैंने -1 क्यों किया, लेकिन ये हो गया क्योंकि मैं देख रहा था कि सब में एक एक कम था, एक ज़्यादा था, तो मैंने -1 से चालू किया. Completed my third year. Completed my third year after diving deep into AI. I'm now exploring Spring Boot while sharpening my DSS skills. Any suggestions from you? Yeah, I'm doing the same thing, bro. With if you are still here, sorry I missed your text. I'm doing that. Uh, completed third year after diving deep into AI. I'm now exploring Spring Boot while sharpening my. Yes, Spring Boot बहुत अच्छे से करो. अभी मैं किसी को समझा रहा था वेद कि if you are in the college, don't directly dive into Spring Boot. Spring Boot के पहले there has been a history of different libraries that were present in the Java. There was a servlet. You should know about the servlet. Then there you should know Hibernate. You should know Spring, and then work on the Spring Boot. Don't directly jump on the Spring Boot. You are not in the professional industry right now. You are still in the college. So go with the basics first. Then only you will understand Spring Boot complete, because Spring Boot is nothing but all these Purana libraries combined internally. So they do all these internal work. So you don't have to think about that, but at least you should know as an engineer कि how the internals are working in the Spring Boot. So don't jump to Spring Boot. जो भी कोई आ रहा है मैं देख रहा हूँ हर कोई ओके मैं Spring Boot करता अरे go with learn basic Java, learn advanced Java. You guys are in college. उसके बाद फिर चालू करो प्रोजेक्ट्स API वगैरह ये सब बनाना. पहले हाइबरनेट वगैरह सीख लो. अगेन लाइक के साथ गेम. यस. हाँ यार, कौन है ये? अरे मैं ना, पता है मेरे मेरे पास इतनी ही राइट्स है कि मैं बाकी लोगों के रिट्रैक्टेड मैसेजेस देख सकता हूँ, लेकिन मैं मॉडरेटर का रिट्रैक्टेड मैसेज नहीं देख सकता. डिलीटेड. यू आर +1 इन दैट. आई गेस इट्स वेद. ही थॉट कि आई शुड आंसर हिम क्विकली, बट आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन ब्रो. आई कुड हैव मिस्ड योर क्वेश्चन. अब एक न्यू प्रोजेक्ट अब एक न्यू प्रोजेक्ट जो चेक करता है किसने. यस. पकड़ के बंद. नहीं नहीं नहीं, बैन नहीं. if if you dislike you gay. Yes, if you took back you if you retract your like, if you take back your like, then you are. Yes. लैपटॉप का सेमीकॉलन बटन टूटा हुआ है. एज अ डेवलपर अगर तुम्हारा सेमीकॉलन बटन टूटा हुआ है ना भाई, तो तुम्हारी जिंदगी टूटी हुई है भाई. एक्सटर्नल कीबोर्ड्स. टैब टेबल स्पेस बहुत कंजेस्टेड लगता है विथ एक्सटर्नल कीबोर्ड. आई प्रेफर लैपटॉप. या मैं भी कभी कभी ये करता हूँ. Yeah, I have been learning about the concepts of those, but I am supposed to make projects or just learn. No, no, no. Entire stuff तुम वैसे सीख नहीं पाओगे. The correct way is to like learn. तुमने एक round of if you have done one round of learning, no, start making the project. Start making एक simple API बनाओ. Do
create only simple APIs. अगर तुम्हें database वगैरह नहीं पता है तो get any dummy API from internet and just try to send that API response over your own response and then start like that. स्टार्ट बिल्डिंग ब्रो, बिल्ड करते करते तुम अच्छे से समझ जाओगे. मैंने भी इस चैनल पे आई हैव डन स्ट्रीम ऑफ, आई बिल्ड 2 प्रोजेक्ट्स. मैंने अभी रिसेंटली जावा वापस से सीखना स्टार्ट किया है बिकॉज आई एम फ्रंट एंड डेवलपर. आई वाज इनटू फ्रंट एंड, नाउ आई हैव स्टार्टेड द जावा. सो आई डिड JWT authentication end-to-end project like login screen, register flow, forgot password flow with the email integration and the backend in the Java Spring Boot. And in that, while doing that, I took the help of AI because I didn't know the correct standard ways. I wrote the code, but it was not the optimal or the best. So, but I knew the best practices because I'm working in the industry. I know the best practices. So I asked the AI to give me the best practices. I created a good bunch of code and that like filters, global handlers, global error handlers, exception handling, checked unchecked exception सब कुछ, and then the same pattern now I copy paste everywhere and now it has become very smooth process for me. I don't have to think about the basics of that. I have to think and build on top of that. So start building, bro. Yash Mishra, Mod 1 IndieDev. Yes, Mod 1 IndieDev 0. Yes, true. Roses are red, violets are blue. It's getting late. It was nice sharing a moment with you, bro. You are a very good Pokemon that I have. Bye. Evolution 3. You are on the third evolution, bro. It could have been better. No, no, it's good, bro. I understood where you are using this line. I know where you are going with that. That day तुमने जो बकचोदी दिया मेरे को अब उस पर डाउट हो रहा है. This line is clearly a Bumble or online dating वाला line, bro. यश मिश्रा, लैपटॉप ही सपोर्ट नहीं कर रहा मेरा कोडिंग, तो मैं भी क्या कर सकता. बहाने एक्सक्यूजेस है भाई, करने वाला कैसे भी कर लेता है. आई एम जस्ट सेइंग ब्रो, डोंट टेक इट सीरियस. Intel Pentium, ask him. Ved Dange, thanks bro. Yeah, do like the stream guys, please don't forget that. Still in silicon. Silicon phase, bro gets into ball real quick. Yeah, I missed one W. I saw W in the chat. कहाँ गया वो W? Where the fuck the W went? Yeah, Arya Singh W. Yes, yeah, because of this problem, no? Yes. See, the beauty of pattern, no, that I am trying to understand that because I know the BFS pattern. I I'll I'll honestly say मेरे को अभी ये समझ में, मतलब मेरे दिमाग में अभी ये समझ में नहीं आया कि इसका फ्लो कैसे जा रहा है पूरा. I've like understood 60-70%, but these things, okay. Then distance, why I'm doing distance plus plus over here because it matched the answer. That's why I did it. Today I'm tired, but tomorrow I'll come back and I'll do the dry run on this one. Uh, I never embarked on that. Okay, okay. My bad. My bad. Assembly में DSA करते हैं चलो. Nice. Early humans. I'll tell you one of my friend when I was doing the CDAC. He was like in from a humble background, so he didn't had a laptop at that time. But everybody was supposed to need a laptop because we went into a COVID mode, complete lectures from home setup. So he didn't had the laptop. So what he did, bro, he installed compilers and all on the mobile, and he literally used to write better code than all of us. Like मस्त एकदम clean code. He used to write clean code, clean classes, clean objects, सब कुछ भाई, literally legend bro. Early humans finally, yeah. Legends. What is assembly? Assembly is that when Steve Rogers says like Avengers assemble, so that is what assembly is. Assembly is surfing, yes. Have you guys done any CNC? मेरे को पता है तुम लोगों ने किसी ने नहीं किया होगा. There is a CNC machine, if you guys know. And do you guys know, can you write the code for that? I have written code for that. I used to work in Siemens company, and I'm from a mechanical background, so my interest at that time was into manufacturing and all. And there was a CNC machine, and the workers were very good. They're like
they used to know the better than the engineers, the workers. So I made a old uncle, a good friend over there. I taught him how to solve a Rubik cube, so he taught me how to do CNC programming there. So there was a CNC machine. You have to place an atom, like atom as in जो भी the metal that you have to work on, you have to keep it like that, and then the program you have to like mark the starting index, like this is 00 and this is, for example, उसमें वो coordinates आते थे, then this and then this, and then you have to, according to the diagram, the cat diagram, you have to give how it should be cut and which tool should be used, because CNC machine is a multi tool ka machine. So you have to choose the tool at what point, should it lathe or should it like turn or should it like scrape. All these tools we can use with the code, and that will give us the final product which is used for the dies. Like there are hydraulic press dies which does the metal manufacturing, like components बनते हैं जो इलेक्ट्रिकल इसमें होता है ना, the L shaped conductor, copper conductor, it has a silver tip. So that what it used to punch. So तुम लोगों ने किसी ने ये नहीं किया होगा कभी, CNC programming. We will save you by not telling you this early in life. क्या क्या क्या? Bad time creates strong man. Assembly is suffering. Assembly करने में तो ये जिंदगी काम कम पड़ेगी. Bad time creates strong man. Yeah. We will save you by not telling you this early in life. Oh crazy. Morning assembly school वाली. हाँ. मेरे को लग रहा है मेरी ऑडियंस बकचोद होती जा रही है. तो अगर यही पैटर्न अपने को कॉपी पेस्ट ही करना है तो हम एक और प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो कल हम पूरा स्ट्रीम डेडिकेट कर देंगे कि ड्राई रन्स पे हम डालें. व्हाट से गाइस? बताओ. भूख भी लगी है. पंचिंग. पंचिंग. Nearest entry and now the nearest exit. Okay, what I'll do, fun. I'll do something fun. I'll not, uh, I will not like think much. I'll just write the code. Uh, क्या करे, करे या ना करे. Oh, streamer. Yeah, streamer effect. Guys, please like the stream, यार. मेरे को I've seen 15 likes too often, so I'm not seeing that today. Uh, it would be good if you guys like the stream. We are on the best of the best problems in the graph to solve, till the time, till these many days we were solving some somewhat easier questions than this, but these are like the ones which been constantly asked in the companies. कहाँ अपना लास्ट प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पूछा गया है? कहाँ गया ये प्रॉब्लम? क्या था वो भाई, वो प्रॉब्लम का नाम? एज फार फ्रॉम लैंड. फार फ्रॉम लैंड. ये कौन से कंपनी में पूछा गया है? Amazon, Hive, Wix, Microsoft, UiPath. Uh, punching wala streamer effect is food is energy. Yeah, I actually want your channel to grow. Thank you so much, yaar. Yaar, thank you so much, buddy. I'll make that happen, bro. I'll post good content for you guys. I'm really into learning. You guys don't don't know me yet completely. So
You give me anything and I learn that, you know. So I can make some good entertaining videos for you. I don't want to have like conventional tech another YouTube channel. I'll show the real side of mine, which I do. Uh, it really felt me good, bro. I'm taking a screenshot of this. मैकबुक में भैंचो स्क्रीनशॉट लो उसको कॉपी करो क्लिपबोर्ड पे तब वो आता है नहीं तो नहीं आता है क्या यार I do not know how to speak Gen Z language but they would probably say something like this NGL I'm chill let's move अरे किसी ने मेरे को अभी पर ने बोला था NGL मीन्स क्या अभी ऊपर ही चैट में था NGL is not something something he said भाई मैं Gen Z हूँ बाउंड्री पे हूँ मैं Gen Z लेकिन मेरे को भी नहीं आता not gonna lie NGL is not gonna lie uh, you guys are not Gen Z no you guys are like latest of the fresh mal from the तुम लोगों को क्या बोलते हैं जेन अल्फा जेन बीटा नॉट गोना लाई ओके यू परचेस द प्रीमियम या ब्रो आई डिड बिकॉज व्हाई नॉट टेक द अनफेयर एडवांटेजेस बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना बिहाइंड द वॉल थे यार तो आई परचेस्ड इट बिकॉज मैंने देखा कि यार इतना तो हम एक बार बाहर जाते हैं तो खर्च हो जाता है तो कभी कभी तो व्हाई नॉट स्पेंड इट ऑन करेक्ट थिंग्स आई हैव वन थ्योरी लाइक बुक्स और उस पर खर्च करता हूँ तो मैं नहीं सोचता हूँ कि वॉट एवर बी द प्राइस ऑफ बुक आई परचेज इट हाउ आई फेल्ट व्हेन ब्रो सेड एनीवन कैन लव अ फ्लावर बट इट टेक्स अ लॉट टू लव अ लीफ ओ ब्रो इट्स ऑर्डिनरी टू लव द ब्यूटीफुल बट इट्स ब्यूटीफुल बाप रे बाप किसने बोला ये कोई मैंने मैसेज मिस किया क्या नहीं मैंने मिस नहीं किया बाप रे बाप ये कहाँ से ला रहे हो भाई ये सब चीज़ें आई एम जेन जी मंगेश भाऊ नमस्कार too late bro too late today Gen Z but not so much that's expensive though lovely Gen Z but not so much you guys how come so you guys can be Gen Z is like from 97 to 2001 or 2005 born I'm not sure 2002 or 2004 something you guys are very younger than that you guys are hardly 18 19 20 21 years max old. Now that Mangesh is here, I remember I have created the Insta channel where only Mangesh is following me. So I have pasted my Insta handle over here. If you guys, if you, if I see like at least 4 5 people following there, I'll start to post uh, from offices and all सब जगह के photos क्या काम हो रहा है हम क्या discuss करते हैं ये सब किसी ने बेंची बनाना खेला है ओल्ड गेम इट्स सो फनी नेम ब्रो नहीं खेला uh okay I'll give guys please do like the stream यार 15 likes हो जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा nearest exit from entrance maze you are given an I'll just give it a quick try just like the last problem अगर ये same pattern से ज़्यादा दिमाग ना लगाए हो जाए तो I'll do else I will tata bye bye. You are given m cross n matrix. Okay, last time it was n cross n and maze 0 indexed with empty cells represented as dot and walls represented as plus. Empty cells represented as dot and walls represented as plus. You are also given the entrance of the maze where entrance is equal to entrance row, entrance column. Okay, denotes the row and column of the cell you are initially standing at like this. In one step you can move one cell up down right bottom. Okay, the standard 4 direction traversal. You cannot step into a wall cell, you cannot step into a cell with a wall
and you cannot step outside the maze. Yeah, true. Your goal is to find the nearest exit from the entrance. This is the exit. An exit is defined as an empty cell that is the border of the maze. The entrance does not count as exit. Okay, so we have to mark this as visited, true, in the beginning. Return the number of steps in the shortest path. So we have to mark this visited, all this. Okay, so return the number of steps in the shortest path from the entrance to the nearest exit minus 1 if no path exists. So in this case we have to pass the minus 1 if no path exists, as in no, if this doesn't exist, so we have to like use the, okay, I understood. I'll solve this from the pattern, not from the draw first and write code, but from the pattern first approach. Okay, uh, so the same things int rows equal to maze dot length length. I'll start to copy the code, you know. There are some charts that I missed. uh, Anyone played? No, I read this message. Old game नहीं नहीं पढ़ा मैंने, मारियो खेला. आई एम दैट ओल्ड ब्रो. मुझे इग्नोर कर दिया. अरे नहीं किया मैंने, कहाँ मैसेज तुम्हारा कौन सा मैसेज मैंने इग्नोर किया? ये गिल्ट ट्रिप मत दो मेरे को भाई, मैंने नहीं इग्नोर किया. वी विल सेव यू बाय नॉट टेलिंग, ये मैंने पढ़ा ना ब्रो. नहीं किया यार, सॉरी. मेरे को नहीं मिल रहा तुम्हारा कौन सा मैसेज, बट आपने लिखा ही नहीं कुछ अथर्व. हाँ यार, सी आई हैव मेड द राइट पर्सन मॉडरेटर. नहीं गए ऐसे, देखो भाई यार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. आई होप आई एम यूजिंग दैट फ्रेज एट द राइट पोजीशन. अरे ये मैंने कोड कॉपी करना था यार. आई कॉपी लिटिल बाय लिटिल, क्योंकि लास्ट टाइम सब कॉपी कर दिया और दो गलती हो गई उसमें. maze visited q and this, and we have to start with the first as visited जो भी अपने को entrance दे रखा है. So it's a this, so we have to mark this as visited uh, entrance. Yeah, entrance 0. I hope there is a better way to write this syntax, but I'm going with this. JavaScript मेरे को इस मामले में अच्छा लगता है कि ऐसे सब चीज़ों के लिए वहाँ पे spread operator और ये सब चीज़ें हैं that we can use. लिम्बो खेला है भाई? नहीं खेला यार मैंने, नहीं गया सीरियसली मैसेज. ठीक है भाई. तो हमें तुम बोल रहे हो कि मुझे इग्नोर किया, मेरे को गिल्ट हुआ 2 मिनट के लिए. लिम्बो खेला, बेंची बनाना भी. आजकल तो एडवोकेट को भी चिल होती है अथर्व भाई. 2007 born. Maybe you guys are around that born era, you know. And then now let me copy this fucking thing, fucking loops. Okay, we'll iterate in this one, and then instead of maze we'll check this, and we need to check if it's a wall. Okay, one is a wall. Oh sorry, one, not one. With empty cells is this and represented as this. So this is like wall. If that is wall, then do I have to add that to queue? No, I have to add the dots to the queue. Okay, and we'll mark dots as visited. Should I mark visited? No, 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 no. I shouldn't. I shouldn't mark it as visited, but that means it's something wrong. So what's the entrance? Uh, what's the entry point for me over here? Sandeep, hello bro, welcome to the stream. Sorry Mario. भाई हम मारियो वाले यार. अथर्व, I wrote all the Gen Z above kids are just seems like monsters for coding like kids.
are getting taught JavaScript in school, then you come around some Chinese kid doing top coding. हाँ यार, एक कोई यूट्यूब पे चैनल है भाई, छोटा सा बच्चा है, था 1000 लीड कोड प्रॉब्लम, 2000 लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठा है, अलग ही गिल्ट दे रहा है वो. He's like on the next level. Do someone play Valorant? हम भी खेलेंगे भाई, हम खेलेंगे भाई. यार मेरे को प्लस, शुड आई मार्क ऑल द वॉल्स एज विजिटेड और शुड आई मार्क ऑल द एंट्रेंसेस एज विजिटेड? If I mark all the entrances as visited, but then I have to visit those entrances, and I'll check if not visited, then the code will never go there. So I guess let's follow the pattern, considering the pattern is correct and our thinking is wrong. So we'll keep it as plus. Okay, we'll add the plus to the queue, and then else if we also need a count, because there is a condition of -1 if there is no entrance present. Entrance is nothing but dot. So let me copy this condition. uh, Let me copy this condition, and if it's a dot, अरे यार, if it's a dot, okay, in this case I'll just increase this, and what is it, empty cells, represented as empty cells as, I'll say empty plus plus. Okay, I should name this variables little funny, जो मेरी खासियत है, हमेशा आई नेम द वेरिएबल्स फनी. सो empty मैं शुरुआत में 0 रखूँगा, ठीक है, एंड देन लास्ट में इसके बाद I will do the BFS over here. Okay, and what should the BFS will return? We don't want to return anything from the BFS. We do want to return the something from the BFS, and that is return BFS itself, because we will make it return an int. But if there is no empty cells present, if empty is empty, then that means return -1, because the condition is saying this. Return the number of steps in the shortest path from the entrance to the nearest exit, or -1 if no such path exists. Okay, this much is okay. Now let's write the BFS function. So our BFS should return the int public int BFS, and what all things we should be passing to this. We should be passing char and entrance. I don't think we need an entrance over here. Then boolean visited, and then we need to pass the q as well. I'll pass the q, and then I need to pass int rows and int column. So first we will take the queue size कि कितना queue size हो चुका है. So let me copy the pattern as it is, or do you guys want me to write? Am I missing on the any chats? आर्यन भाई का चेक सही गया. मैंने कुछ मिस कर दिया भाई तुम्हारा, मेरे को चाहिए रेफरेंस. वैलोरेंट इमॉर्टल बाय द वे अहम. ओके. भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा. वैलोरेंट बस पता है मेरे को एक गेम है, वो मॉर्टल वगैरह खेलते हैं. मॉर्टल ट्रू. अरे भाई गोल्ड हार्ड स्टक, कोड करो चुपचाप. हेलो. सालिस स्मर्फ 8. भाई क्या लैंग्वेज है ये. आज तो 4 बजे तक स्ट्रीम करेंगे. ट्रू भाई, मैंने खाना नहीं खाया है. आर्यन भाई का चेक सही गया. WDYM, इसका कुछ तो लॉन्ग फॉर्म होता है विथ बाय मेरा चेक सही है. WDYM का क्या होता है यार? वही वही वालों खेलने वाला. WITM. व्हाट यू डूइंग मैन. ओ, व्हाट यू डूइंग मैन बाय मेरा चेक सही. हाँ मेरे को भी बताओ भाई, उसका चेक सही गया? क्या चेक सही गया उसका?
तो मेरे को यहाँ पे चाहिए इंट साइज इज इक्वल टू क्यू का साइज, क्यू डॉट साइज, ठीक है. एंड I need to iterate on that. Did I make the visited? Yeah, I marked the visited. Hey, let me copy this code, because it's the same. Why should I write all these values, all these things? जाने क्यों लोग प्यार करते हैं. What do you mean? Oh, okay. What do you mean, भाई? यार मेरे को नहीं पता ये सब चीज़ें. What do you mean होता है. ओके ओके. मैंने क्या गूगल किया, ठीक है, मैंने कुछ अलग किया था. थैंक यू फॉर दैट बताने के लिए मेरे को. व्हाट डू यू मीन मीन्स व्हाट. समझा समझा. थैंक यू गाइस, बट उसका आंसर नहीं दिया. व्हाट डू यू मीन चेक सही गया मतलब? चेक सही गया मतलब क्या? भाई ये माउस भी ना. आई एम सॉरी. Pull this out, then let me change this maze to maze. Here, copy, paste, paste, paste. और कहीं है क्या? नहीं. हाँ, मैंने क्या लॉजिक सोचा था यार. अभी लॉजिक क्या था मेरा? मेज और एनआरएनसी अगर इफ दिस यूजुअली दिस इज अगर प्लस है, दिस इज प्लस, then usually that is the opposite of what is plus. So it should be this. अगर dot है तो check करो. And then it is not. This is what the distance that we have calculated. I should have copied this code, uh, this is more of that, but ठीक है. uh, ये लाइन नहीं चाहिए होता है अपने को यहाँ पे. तो हमने क्या किया था, और अपने को चाहिए कि डिस्टेंस चाहिए. नाउ वी वांट द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. So distance will be that only. Let me write as the last problem, distance is equal to 0, and then we will do distance plus plus over here. ठीक है. I'll just check the if it's the correct answer or no. Like it, मतलब obviously it will be wrong answer, but at least it should run. Return distance. Okay. So let me try कि कितना ऑफ है हम. रिटर्न, हाँ, BFS. इसमें कौन भरेगा वैल्यू? मेरे चाचा. विजिटेड बुलियन, बुलियन व्हाट द फक ब्रो. क्यू क्यू यू यू रोज कॉमा कॉलम्स. ठीक है. ओके, एक केस पास हुआ है अपना, विच वुड बी ओके. टू वाला केस पास हुआ. लेट मी सी हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर पासिंग. Oh, 8 out of 194. That means we are so wrong. We are so wrong. Now let's think. Uh, गूगल. डू यू मीन गूगल करना पड़ रहा है तो हो गया बुड्ढे सम. मैं बोल सकते हो भाई यार. आई एक्सेप्ट द रियलिटी ब्रो. वो मुझे भी समझ, वो मुझे, हाँ वही वो पता नहीं. ही इज लाइक इन हिज वर्ल्ड. चेक किया. एज ही वॉज आस्किंग टू प्ले वैलोरेंट यू सेड विल प्ले. तो एक टाइम पे मैसेज आए. ओके ओके. आर्यन अब पूरी रात वही सोचेगा कौन सा चेक भाई. उसे बस बैंक चेक पता है. ट्रू एएफ. ट्रू एज फक. मैं इस एएफ को आफ्टर ऑल समझता था भाई. कितने ये किसी ने मेरे को एक लास्ट स्ट्रीम में बताया. बॉल नोवर. बॉल नोवर मतलब क्या वर्ड है भाई? बढ़िया. बॉल नोवर. बॉल नोवर मीन्स, बॉल नोवर क्या होता है आप पूछ लो. सॉरी.
टाइमिंग बड़ी परफेक्ट टाइप है आर्यन भाई. इंडी डेवलपर ये बॉल नोवर. अब लेट मी well this ball, there is no word as such. A ball knower is internet slang for someone who possesses deep, highly advanced or niche knowledge about. Oh bancho. So I'm a ball knower YouTuber maybe, or maybe I'm a ball knower baller. If you guys don't know, I'm a very good baller. यहाँ से अंदर आएगा. So this यहाँ पे, this is the entrance point. We have marked uh, plus. We have marked the plus. Yeah, we have marked the plus as visited. So this is visited because we don't want to go inside this. Okay, now this is this, and we got all the walls, these walls inside this. Okay, and when we are like popping this element, we are popping the this. No. We need to do it with the entrance. We need to do with the entrance. We need to do with the entrance. So this R and C. RNC should be the uh, entrance. So we need to add the entrance to the queue. We did add the entrance to the queue. We didn't add the entrance to the queue. We didn't add the entrance to the queue. I'm doing it wrong, I guess, because I need to add QUE dot add uh, new int entrance, which is like this two entrance 0 entrance 0 अरे इसका कोई अच्छा सिंटेक्स होगा, मैं गलत सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ, लंबा ये ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड देन error not a statement, line number 7, QUEUE dot add new int. Can I do this? लाइन नंबर 7 में क्या प्रॉब्लम है? सेमीकोलन कहाँ? क्या तुतुल पुतुल भाई? डिड आई मिस सो मेनी चैट्स. इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करो, मस्त जेनजी बन जाओगे. ये मुझे भी नहीं पता. सच में भाई, पता है कोई कोई लोगों ही एक्सट्रीम जेनजी है, बाकी सब नॉर्मल ही है. भारी शब्द है. यस ब्रो, हैव ऑलरेडी सर्च्ड बॉल. व्हाट इज बॉल भाई? मैंने नहीं सर्च किया हुआ है बॉल नॉलेज. वहाँ पे आया, सजेशन में आता है भाई. तुम लोगों को नहीं पता क्या सर्च कैसे काम करता है. ये साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना अलग ही स्किल है. कड़ी तपस्या. यस. अरे नहीं, वो गूगल ने सर्च रिकमेंड किया. यस, दैट्स व्हाट ना, दैट्स हाउ सर्च वर्क्स ब्रो. अब अपने को नेक्स्ट सर्च का सिस्टम डिज़ाइन बना के तुम लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो हाउ इट वर्क्स. इट डजंट मीन कि आई हैव सर्च दैट. इट मीन्स कि दैट इज़ व्हाट most of the people search, and that is what shows as the autocomplete recommendation in the search. True motivator. Recommend तब भी किया
क्योंकि सर्च कर नहीं यार. When he said he is streaming to learn new skills, this is not true. I mean so. Yeah, anything new learning is new, bro. You can't judge a skill. Coding भाड़ में जाए. You wanna be Gen Z. Yes, 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 yes. I wanna be Gen Z. मैंने कोरियन पैंट्स पहनना चालू कर दिया है. Skinny pants. I have skipped on the skinny pants. Uh, what else I did? Uh, ब्रो बोलता हूँ मैं अब की हर किसी को ब्रो. एंड देन मैंने मैनेजर को उल्टा बोलना चालू कर दिया है. वो अलग ही लेवल का बंदा था है. लैमो, ये लैमो भी मैं देखता हूँ लेकिन मेरे को इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं पता. एक्सट्रीम जेंजी कुछ नहीं होता है, बस थोड़े यूजुअल शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं. यस. ओ हाँ, आई सी. जेंजी बहुत तेज होते हैं. नेवर फॉरगेट. या. भाई इसको तो मैं करके ही मानूंगा अभी ना. आ, कोई तो टेस्ट केस पास हो रहा था क्या? 9 टेस्ट केस, 5 थे 9 हो गए. तो वी आर स्टिल ऑफ बाय bit. Is there any pattern of this? 2 output is 2, expected is 1, and it matched. Okay, and 1 is expected is -1. So distance should start from -1 like last problem. Okay, एक टेस्ट ये पास हो गया, वो फेल हो गया. Let's check if we are near. Oh, 29. That means that this is better. It should start from -1. Distance plus plus, but the distance shouldn't. And then this q add दिस. गाइस मेरे को 15 लाइक दिखने चाहिए थे यार, मेरे को नहीं दिख रहे. नाउ आई एम थिंकिंग एक्सट्रीम जेंजी हो. ओ हाँ, आई सी जेंजी लाफिंग माय एस आउट. ओके, लाफिंग माय एस आउट. मेरे ज़माने में लॉल आया था भाई, वही मैं समझ गया था. लॉल, लाफिंग आउट लाउड. टिल द डेट आई यूज लॉल. लाइट 10-15 कट हुई है अभी, 1.5 घंटे से नहीं आ रही. आता हूँ, वाईफाई इन्वर्टर लेने ही पड़ेगा. यस, पूरा घर का ही ले लो. अगर कोई प्रॉब्लम शेयर करे इंसान यहाँ पे तो मुश्किल है मेरे को लग रहा है. कैन यू गाइस टेल मी व्हाट वाज द लास्ट बिग फनी प्रॉब्लम दैट यू हैव बीन इनटू? मतलब द प्रॉब्लम कुड बी एनीथिंग बट इट कुड हैव बीन अ बिग, बट इट्स एट द सेम टाइम इट्स फनी. हैव यू गाइस हमने क्या किया यहाँ पे? एम टी ज़ीरो लिया, तो एम टी वाला कंडीशन. टू में अभी क्या दे रहा है? 1. आउटपुट 1 बट एक्सपेक्टेड इज 2. So output is 0 but expected is -1. वो तो घर वाले लेंगे. ठीक है होगा कुछ. सो आई विल नॉट प्राई. आई विल नॉट प्राई. तुम लोग या तो खेल रहे हो मेरे साथ अभी, या इट्स अ लेजिट मिस्टेक. लीड कोड प्रॉब्लम. नहीं समझा मैं अथर्व. मैंने ये पैटर्न फॉलो किया अभी. लेट्स, कैन वी इन्वर्ट दिस पैटर्न एंड देन थिंक कि, because I thought कि this wall should go in the queue, but I am thinking my first thought is wrong. Problem funny. हम केक बनाया था एयर फ्रायर में. एयर फ्रायर में हो जाता है. आज ही मैंने एयर फ्रायर यूज़ किया. उसमें जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चकली टाइप होता है, उपवास के दिन खाने वाली.
वो डाला, मैं आके बैठा, मेरा कॉल चालू हो गया मैनेजर के साथ, तो पूरा जल गया भाई, एयर फ्रायर में जल गया। होता है भाई, सब नींद में। हम पता है, वी आर नाउ सो ड्रूम स्क्रोलिंग, नो, दैट्स व्हाई द रेगुलर टास्क हैज बिकम so extravagantly funny that we are not able to focus fully on the task that is at the hand. I don't know how I'm able to how I would have been able to write code for 3 hours if there wasn't been a live chat in front of me. I would have scrolled so many reels by this by now. You know, if you guys can relate. मेरे को लगता है ये सिंटेक्स गलत है, ये पहले वाला ही सिंटेक्स सही था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, 29 का 29 ही है, तो ये भी सही था, वो भी सही है। गाइज मेरे को लगता है हम बहुत ही गलत है इसमें। कल इज्जत से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आज मेरे को नहीं लग रहा कि ये सॉल्व हो पाएगा। मेरे को लगता है हम्म, चिन्नम्मा चिन्नम्मा। फनी फनी। भाई ये बहुत ही गलत है, हम इस प्रॉब्लम में। ओ 14 लाइक्स हो गया भाई, अरे थैंक यू सो मच गाइस। एक लाइक दे दो और मैं सोने चला जाऊंगा, फिर खा के सोने चला जाऊंगा। टेल मी गाइस, एनी वन ऑफ को आप में से कौन कौन हॉस्टल में रहता है? इज एनी वन ऑफ यू डज एनी वन ऑफ यू गाइस लिव इन हॉस्टल्स, कॉलेज हॉस्टल्स और कोई हॉस्टल्स? आई वांट नो हाउ मेनी हॉस्टलाइट्स आर हियर। शो मी हैंड्स, बिकॉज आई एम अ हॉस्टलाइट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। कट द केक, केक कटा, केक काटा जाए। एयर फ्रायर वाला केक काट सकते हैं। हॉस्टल फर्स्ट ईयर तक था, फर्स्ट ईयर तक हॉस्टल था। ओके अथर्व, यू आर फ्रॉम मुंबई, सो व्हाट्स योर, यू आर फ्रॉम विच कॉलेज ब्रो? बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द मुंबई कॉलेज, आई एम फ्रॉम मुंबई। सो विच कॉलेज यू आर फ्रॉम अथर्व? गोइंग बैक टू हॉस्टल सुनिया, गो बैक टू हॉस्टल एज सून। ए किसी ने लाइक वापस ले लिया यार, ये मत करो यार। यार आप लोगों को पता है, 2 बार लाइक बटन दबाओगे तो लाइक द लाइक गेट रिट्रैक्टेड, डोंट डू दैट, इट्स रियली annoys me, you know, because I was seeing 14 likes, now suddenly it's showing 13 likes. Did I say anything wrong that you guys are taking back my likes? ये मेरे को ये ब्लॉक में ही कंफ्यूजन है भाई, ये पूरा ब्लॉक, ये मेरे को लगता है ये मैंने सही किया है, यही ब्लॉक मैंने गलत किया हुआ है। अरे तब भी एक केस पास हुआ, व्हाट द फक, मैंने ऐसे ही हटा दिया इसको। इज इट? Oh, 22 test cases. Oh, is it not required then? Is it not required? Should it be dot और प्लस? ये मैं देखो ही ना, इसको मैं हटा देता हूँ तब तक के लिए ना, एम्प्टी वाला हम बाद में सोचेंगे, इट्स एक्सट्रीम एज केस। ओ सब कुछ फेल्ड। ओ इसको अपोजिट करना होता ना, अगर मैं इसको प्लस करूँ और उसको डॉट करूँ, बिकॉज these two are opposite. Oh, it passed one case. Now bro, it became very funny. Oh, 36 test cases.
मैं एंड करने वाला था, मेरे को लगा भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अब ये टेस्ट केसेस बढ़ गए, तो ये सही है। मैं कुछ भी ना करूँ तो। नो इट फेल्ड, सो वी नीड टू हैव दिस। यार तुम लोगों में से कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हॉस्टल फर्स्ट ईयर, ओके। हाँ, हॉस्टल गोइंग बैक, जल्दी जाओ, लोडिंग, योर हॉस्टल इज लोडिंग, आई नो। मुंबई से हूँ बट कॉलेज पुणे में। अरे कौन सा कॉलेज? ये मीम बहुत ही नेक्स्ट लेवल चला गया भाई। अगर मैं पुणे से हूँ, अभी मैं आई एम वर्किंग इन पुणे, अगर ये किसी ने गलती से भी बोल दिया ना लड़कियों के सामने, सो इट्स गोइंग रियली इन द रॉन्ग डायरेक्शन। विच कॉलेज इन पुणे ब्रो? अथर्व? अथर्व सुधा में? विच कॉलेज ब्रोदा? गाइज आई थिंक ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला है। कल हम आके इसमें दिमाग लगाएंगे, बिकॉज आई ट्राइड विद द सेम पैटर्न दैट वाज फॉलोइंग लास्ट। एक प्रॉब्लम हो गया, भगवान बोला जा बार बार बकचोदी नहीं चलेगी, एक बार चल गया। ये नहीं, ये कुछ तो अलग है, हम कुछ भी कर रहे हैं अभी यहाँ पे, इट्स पॉइंटलेस नाउ। गाइज प्लीज गिव माई लाइक बैक यार, डोंट डू दिस। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रेटिंग 2.1, वेंचर धार करप्शन, करप्शन ही करप्शन है, यस। Oh, you are from MIT. Which MIT? Oh, nice, nice, nice. You are from MIT college. Good, bro. So there is no hostel. I know that. I didn't even say anything. आपने खुद अरे भाई मैं फिर चांस पे रहता हूँ, मेरे को नहीं पता रहता ये सब चीज़ें। लोंडो को ऐसी सब चीज़ें पता रहती है भाई। I know you are like doing ulta ball game on me, bro. MIT Pune, damn good enough. Yes, too good college. I want to eat something sweet now. I'm hungry. Should I order something? But I'm on diet. My trainer is messaging, sir, please come early in the morning. अब उनको कौन बताए कि हम 1:30 बजे तक स्ट्रीम कर रहे हैं? वो MIT कोथरूड। बढ़िया भाई। I got a comment from Aryan. Lovely click. Aryan, dog Aryan. Welcome to the Fang, bro. If you guys show some interest in Instagram, na my Instagram account, I'll seriously start to post something good. Not the cringe reels for sure, because I don't wanna cringe out. मेरे को Instagram cringe लगता है बहुत ज़्यादा ही. I'll show the real life, real struggles of the uh, not only struggles but good part, bad part, सड़ा हुआ सब कुछ मैं दिखाऊंगा. How the IT guys party, how the IT guys work. MIT is MIT, bro. Yes, delusional Massachusetts Institute of Technology. Yeah, guys, please give me the like and I'll off from it. अरे मैंने स्विगी, यही होता है आजकल, पता है, फ़ोन खोला ऑर्डर करने के लिए और साइड में रख दिया इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन देख के। ओके, ओके गाइस, इट सीम्स हाँ 13, अरे 14 हो गए थे। समवन retracted 1 like, bro. Post some motivations. I'll post you guys over there, okay? Just a second. In the story. Uh, say say something. Oh, how many you guys are showing up here?
uh, rich people. Rich people कौन भाई rich people? Where are your parents? अरे my parents are in the hometown, bro. My hometown is Nanded from Maharashtra, if you guys know. My parents live there. I am working in Pune, so I live here. It was a OG stream. I'm posting the story with your chats. जाने क्यों लोग प्यार करते हैं जाने क्यों वो किस I'll not let you I can see all you guys over here. Okay, so let me post it so that I'll know who is following me. uh yeah, ये मैसेज आ गया तुम्हारा स्टोरी पे आता रहो. ओले स्टोरी. Do you live in Pune just for the job? Yeah, yeah, yeah. Just for the job, yes. I lived in many cities for the job. I lived in my first job was in Greater Noida, if you guys know. There is a city ahead of Noida, which is Greater Noida. And there is a fun fact about Noida. Do you guys know Noida has a full form. It's an acronym. There is a full form of Noida. If you guys can know, I'll like send something to you if somebody tells me without googling within next 3 seconds. One, two, three. I'm still following it. It मेरे तरफ से अभी फॉलो है जब डाउनलोड यस यस ब्रो आई नो. एज्यूम फॉलो यस. मोटिवेटेड डिवाइस एमआईटी के लिए मुझे बोला क्या मुझे वही एक अच्छा मिला तो वही लेना पड़ा नहीं तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली था. कोई नहीं भाई गवर्नमेंट और ये सब मैटर नहीं करता. नहीं मुझे एक्चुअली लगा वो वाला एमआईटी पता नहीं था इंडिया में भी. हाँ पुणे में है भाई एमआईटी. माय फादर वाज फ्रॉम एमआईटी कॉलेज. आई डोंट नो दो. आई हैव आई लिव देयर. हमारे पिताश्री थे एमआईटी कॉलेज से. ग्रेटर नोएडा इज समथिंग दैट्स आउट ऑफ ओरिजिनल नोएडा. Wow, who is naming this? Noida is a full form, There was a part in Delhi where only the industries were possible. Delhi has some earthquake wala issue, so there, if you have been to Delhi, you can see that there are no tall buildings possible in Delhi, or no industries can be formed in the Delhi, but the no, Okhla part, because it comes under some earthquake prone zone 4 something something. Hence, all the industries are located in the Okhla, but after some point in time, the Okhla got filled, like there is no more space left in the Okhla. So, government decided to make a new Okhla by taking the land udhar from Uttar Pradesh, because Delhi has very less land, Delhi is very small, so they took a land from Uttar Pradesh and created a new town, and that is what New Okhla is. So the Noida is nothing but New Okhla Industrial Development Association, Noida. So I guess you guys might not know why the name is Noida. So it's a New Okhla Industrial Development Association. Yeah, it's far 27 kilometers almost. अभी तो तब तो मैं था तब तो मेट्रो बन रही थी वो मेट्रो खुल गई लेकिन फिर भी इन बिटवीन मेट्रो लाइक अशोक नगर पे मेट्रो यू हैव टू चेंज सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है तो चलना पड़ता है थोड़ा सा. अलग ही कहानी थी भाई वहाँ पे. ओ या यस. सी यू गाइज लर्न समथिंग न्यू. बताओ मेरे को WDYM का फुल फॉर्म बता रहे थे मैंने तुम्हें नोएडा का फुल फॉर्म बताया. ये तुम्हारा बात करते अरे बहन का भाई.
Let me order this. Let's not start that, bro. Oh, that debate goes on. Oh damn, yes, so lovely यार. Yeah. चलो guys, अभी ये प्रॉब्लम तो होने से रहा क्योंकि it is very different than what we supposed to be. So let's. Yeah, ग्रैंड पाई बना दिया भाई आज स्ट्रीम पे मेरे को तो. ठीक है guys, it was my grandchildrens. It was really nice talking to you all. मज़ा आया आज को क्वेश्चन सॉल्व. जब जिस दिन क्वेश्चंस होते हैं, जिस दिन पैटर्न दिमाग में बैठ गया ना, उस दिन क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते भी. आई सीन. एंड जिस दिन पैटर्न नया है, इफ ऑन एनी सम रैंडम डे वी स्टार्ट विद सम न्यू पैटर्न एंड वी हैवंट डन एनी क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर पैटर्न, देन द क्वेश्चन लाइक एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाता. सो इन दैट केस आई रियली स्ट्रगल एंड आई हैव सीन दैट people really like to see me struggle over here. I don't know what kind of a fantasy you guys have that you want to see a grandpa struggle over here. True, pick up Delhi. Yeah, GG. Chalo guys, good night, take care, and we'll see you soon tomorrow. So I'll be coming up with. Let me end this poll now. I have asked you the question about this, so I can see 57% voted the rate limiter and 43%, almost 25. How many votes? 21 votes. 43% distributed login system. So rate limiter is a winner over here. Not by far, but yeah. What? अरे भाई, there is a system design का problem that I have to do. That's what. क्या हो गया नहीं समझा मैं. चलो, मज़ा आया guys तुम लोगों के साथ बातें करके आज. It was like I became little bit of Gen Z, but you made me grandpa at the end, so it's okay. I would not take that, but ठीक है. I don't have any option. चलो, I don't even know either of those, but still, why? That's how democracy works, bro. How many of us don't know ki how government works, but still some people vote and like that's how the wrong people get selected. Sometimes somebody else votes for us. Sometimes we don't vote. Good night. Yeah, yeah. Good night. Good night. Good night, guys. It was all nice talking to you. Nice stream. अच्छे question solve किए. How many? At what number we are sitting right now? 74. 74. Yeah. 75. So it is a good all in all stream. After so many days, we solved new questions because we were like revising the old question. Revise करना भी बहुत ज़रूरी है. सब कुछ ज़रूरी है. So चलो. Okay, guys.